हे हेलो हेलो दोस्तों। सबकी हाल चाल सत श्री अकाल। या ऐसे हो सब? सब कैसे हो? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक लाइव स्ट्रीम पे, जहाँ पे हम फिर से खेलेंगे। नहीं, फिर से तो नहीं, आज करेंगे जेनसिन का नया वाला आर्कॉन क्वेस्ट गाइडेड। बिना किसी देरी के चलो चलते हैं गेम को ऑन करने। हम पहला ओबीएस को दूसरा स्क्रीन पे लेके चलेगा, क्योंकि तुम हो एक झींगा। ये ये झींगा। हम्म, और क्या हाल चाल बताओ? हाथ का ये धागा भीगा हुआ है, साला पूरा माउस पैड भीग गया। अरे 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 अरे, भैया बदतमीजी नहीं करने का, गंदी बात है। अरे बहुत मारूंगा, हट जा। स्पॉटिफाई भी चालू हो गया। ठीक है, चलो गेम में चले, गेम चालू करते हैं।
तो हम आ चुके हैं गेम के अंदर। और पब्लिक यूजर मैसेज डिलीट करता है। लिखा है चुपके से लव स्ट्रीम भाई। नॉट फेयर। कहा लव स्ट्रीम? कौन सा क्या कर दिया? चुपके से लाइव स्ट्रीम ब्रो। हाँ, इधर चुपके से लाइव स्ट्रीम कैसे? नोटिफिकेशन नहीं किया क्या? तो चुपके कैसे कैसे किया मैंने? क्या मतलब है तुम्हारा? बाय द वे, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। Ad Astra Abyssosk. Welcome to... Thank you for completing... Ad Astra... Spelling mistakes. Understandable. Understandable. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. Don't keep your voice down. What a place. Rome is full of surprises. और बता क्या हाल चाल? डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? आओ जरा, आज सीधे चलेंगे आर्कॉन क्वेस्ट की तरफ। आज क्या प्लान है? आज का प्लान है जो थंबनेल पे लिखा है, आर्कॉन क्वेस्ट करेंगे। आर्कॉन क्वेस्ट जो आया हुआ है,
वाह भाई 20 FPS दे रहा है, वाह। सेटिंग क्या है? 980 तक 2K भी नहीं चल रहा, फिर भी तो कम FPS क्यों दे रहा? अरे भाई रुक जा, नहीं करना मेरा का फाइट। क्या दिक्कत है? FPS इतना कम क्यों है तेरा आज? ब्राउजर बंद कर देता हूँ। हम्म। भाई तगड़ा बारिश आया, 1 सेकंड रुकना। हाँ आ गया वापस, बोलो क्या हाल चाल, क्या कह रहे थे? आवाज कम सा क्यों आ रहा है? आज का क्या प्लान है? आज का फिलहाल आज का तो प्लान है आर्कॉन क्वेस्ट करेंगे। Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Okay, she's all patched up. Where did you say you found her? How'd she get wounded so badly? Just on the beach not far from here. It was the usual suspects. Hey, Chaska! What's going on over here? Paimon. And Tumaini? Oh, hey, it's you two. Been a while. Yeah, thankfully Chaska got her to me in good time, so I think she'll pull through. She was attacked by secret source automatons. I was on patrol nearby, so luckily for her, I was able to get her to safety. Oh, them again, huh? What is it with those maniacal machines? I'm getting real tired of their antics. Real tired, bro! Real tired! Secret source automatons? That's strange. We've come across those before, but definitely not around these parts. Yeah, who knows what's gotten into them recently. They've been attacking Saurians and merchants on the outskirts of our territory. No need. You've already done plenty by getting the Abyss off our backs. Without them draining our resources, our warriors can handle these rust buckets no problem. अरे टट्टी बटरफ्लाई, तुझे कीबोर्ड के अंदर घुसना था, निकल। Besides, like our ancestors used to say, one's own nest is one's own to protect. We can't go dumping. Come on! What happened to birds of a feather? We're your friends! Plus, we'll be leaving for Nod-Krai soon, so, you know, while we're still here... It would be nice to spend some time together. Huh, fair point. It's been a while since we got to fight together. One last hurrah then, for old time's sake? We could hit the beach.
Hey These Rajkamal, Talmudons have been welcome to pretty the active there stream. lately. Hey Rajkamal, welcome to the stream. Hello, hello. What's up? क्या हाल चाल? Awesome! Let's go! Let's go! If hunting down war machines is just sport to you, you guys really are built different. Still, guess I should tag along too, just on the off chance someone ends up getting carried away. No way, bro! मैं मेरा आईडी रिव्यू कर दो ना. मैं नुबड़ा हूँ, न्यूबी हूँ. अच्छा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा वेट करो, अभी आर्कन क्वेस्ट में है. Where are they? Must find them. Traveler. Paimon. ट्रेवलर पाइमोन, इसको कैसे पता ट्रेवलर के बारे में? Then return home. यूआईडी ओके, देखेंगे, रुको सब्र करो. Takes me right back to the Night Warden Wars. What's going on over there? Oh no! Looks like she's passed out! And there's an automaton! Quick, save her! Switching gears. Fulfill our pact. भाई कर देना, नुबड़ा हूँ, ज्यादा 5 स्टार कैरेक्टर्स नहीं है. How's it looking? Is she badly hurt? अच्छा, अभी देख के तो लग रहा है यार 60-60 हो गया तुम्हारा. Hard to say. You might want to see this for yourselves. A vet treating a human is one thing, but I'm not sure I'm qualified for this. You call that a human? Bro! Whoa, okay. She's a machine? A machine built to look like a human, I guess. Is this a new model of automaton? Return home. She spoke! Paimon. Traveler. What? You heard that too, right? नहीं यार 60 भाई, नहीं यार 60 भाई, मेरा 2 टीम बना देना. कि नहीं यार 60 भाई, मेरा 2 टीम बना देना फर्स्ट पैरल लबीस. ब्रो मैं कुछ ज़्यादा प्रो प्लेयर हूँ नहीं, पर ट्राई करूँगा. Oh, take a look at this. I found it on the ground next to her. See the picture on top? That's you guys, right? Really? Wait, a blonde person with a white balloon? That can't be right. You bet, bro! There's also a cipher disk on it. I guess it needs a code to unlock it. We have 2 gunslingers here. Can't we just blast it open? Yeah, I wouldn't risk it. I've seen the scions of the canopy use similar devices when they're sending confidential messages. If you put in the wrong code or try to open it by force, it triggers a self-destruct mechanism inside. You can check subscriber notification. ओके, अगर आपका सब्सक्रिप्शन पब्लिक होगा तो अभी यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे या इधर कहीं पे आएगा, स्क्रीन के बीच पे अभी आएगा अगर पब्लिक है तो. बाय द वे, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वैसे मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ, आदत हो गया है, कैमरा इधर है, माफ करना मेरे को भाई. आई एम नूब. अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी हूँ नूब.
Sure looks that way. Question हमारा प्रो अभी is, चैट पे आया नहीं है. who's the फ्रैगर. messenger? So, we gotta revive a high-tech humanoid and crack open a cryptex. I only know one person with that kind of expertise. Shall we? Sounds like a plan! Time to head to the Children of Echoes and find Shilonen! टोमो हूँ भाई. अरे कोई दिक्कत नहीं है. चलो क्वेस्ट हो गया चालू. जर्नी होम द न्यू आर्कॉन क्वेस्ट. तुम्हारा आईडी देख लेते हैं एक बार जल्दी से. AR-56. अरे पता था मेरे को. AR-56 वेरेसा. ओ भाई वेरेसा का ये है फ्रेंच लेवल 10. बढ़िया दिखता है मेरे को तो, ये बहुत पसंद है. बिल्ड क्या है नहीं जानता. अच्छा 32 212 अटैक. अरे यार हट गया. अटैक 1600. शैडो R3. ओके गुड. EM सैंड्स को बेटर कर सकते हो भी अच्छा मिले तो. ये भी अच्छा है. क्रिट डैमेज सर्कल है. क्रिट रेट 7. ओके देखो मैं एकदम बेसिक प्लेयर हूँ ठीक है, तो मेरे को जितना पता है उतना ही बोल रहा हूँ. ये लेवल अप कर लेना टैलेंट्स. लेवल 90 पे 7-8 एटलीस्ट 9 तो नहीं चाहिए थे. क्राउन कर लगे तो और अच्छा होगा. अगर थोड़ा और बेटर हो सकता है. ब्राइडल शैडो यूज करते हो सके तो अटैक थोड़ा और बढ़ाओ. 1600 है ना, तो थोड़ा और अटैक बढ़ाना पड़ेगा. कितना डैमेज देता है वैसे अभी मवई का? कितना डैमेज करती है? एलिमेंटल मैस्टरी तो बहुत अच्छा है. लेवल 90 फुरीना. यार डैमेज नाइस. 3,60,000 डैमेज मवई का. अटैक थोड़ा और बढ़ा लो. अगर सर कोई से सबस्टेट से मिल जाए तो अच्छा है, जहाँ तक मेरे को मालूम है. इसके आगे मैं नहीं जानता. अगर कुछ गलत बोला तो कुछ बोलना नहीं मेरे को. HP सेंस. HP गॉबलेट. डैमेज सर्कलेट. वैसे अभी फ्रैगर रहेगा तो वो पूरा अच्छे से बोल पाएगा. वो उसको नॉलेज है अच्छा खासा. उसी से मेरे को नॉलेज मिला है मवई का वाला. उसने ही बिल्ड करवाया ऑलमोस्ट. फिनाले ऑफ द डीप. मुझे स्कर का कोई नॉलेज नहीं है, मेरे पास है नहीं. चलो अभी सेम सीन है. अभी शीतल क्या ये अभी करंट बैनर पे निकाले.
अरे ढुके गुड़ गुड़ को थोड़ा चले जाए। नूब हूँ, बेल्स नहीं जानता इतना। अच्छा अच्छा, यस करंट, ओके, इसीलिए अभी लेवल कम है। वेपन तो ठीक है। ओके गुड। गॉबलेट कुछ कोई अच्छा और 4 स्टार 5 स्टार मिल जाए तो दे देना। ये सिंगल बिजनेस इंस्ट्रक्टर का क्या ही होगा। 30 फिर सिर्फ 63 देता है इस पे। बस मेरे को इतना ही नॉलेज है, मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा मेरे को नहीं पता। फिर भी तो हमारा 12 2 तक जाता है, मेरा नहीं गया ही नहीं। मेरे साथ देख लो। हाँ, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। 68 टू 5 कॉपर कॉन्सुलेशन देखो। C1 ओ बाय, नाइस। पर मुझे इस इनके बिल्ड्स के बारे में नहीं पता है। अरे एनिफा का वेपन, एनिफा राइट, एनिफा का वेपन है ना। ये चितलाली वेपन मैंने हार गया था। अच्छा अच्छा बिल्ड है। अभी थोड़ा हमारा हमारे प्रो को आने तो उससे ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। भाई अब वेलो नहीं, F2P फ्री टू प्ले। थंबनेल पे इतना बड़ा बड़ा लिख के रखा है ब्रा, थंबनेल पे इतना बड़ा करके लिख के रखा है F2P। मैं वेल नहीं हूँ। वेल होता तो अलग सीन था ना। भाई आप ना बेल्स दिखाओ, रुको दिखाते हैं। ये मेरे माफुरिका का बिल्ड है। 47 टू 14 2.9 के का अटैक। वेपन वुल्फ केप स्टोन 30 because I am just a normal casual player। F2P आर्टिफैक्ट देख लो। मुझे एक अच्छा सेंस चाहिए, मैं इसी की तलाश पे हूँ
कि सैंड थोड़ा एक अच्छा मिल जाए। वो वुल्फ गिव स्टोन, यस, स्टैंडर्ड बैनर से मिला था मेरे को। और यहाँ पे है ये पायरो डैमेज बोनस। एक्चुअली ये मेरे गामिंग का था तो मैंने इसको मावोइका को दे दिया। क्रिट डैमेज सर्कुलेट, और ये रेड लाइन, डबल क्राउन, डबल क्राउन, आई वन 5 स्टार क्लेम मोड। मिल जाएगा मिल जाएगा। फिलहाल मैं मावोइका पे अटैक सैंड यूज कर रहा हूँ, अटैक सैंड्स। मेरा ईएम सैंड्स कुछ अच्छा है नहीं। और मेरा सित्ताली का कुछ ऐसा है, 931 का ईएम है, एनर्जी रिचार्ज थोड़ा कम है। फिर से मैं वही का बैनर तो सिग्नेचर पुल करूंगा। ऑल द बेस्ट। वेपन सेम जो तुम्हारे पास है, आर्टिफैक्ट भी कुछ खास है नहीं। मेरा बस मवई का ही अच्छा बिल्ड है क्योंकि अभी रिसेंट किया है, तो अभी धीरे धीरे बाकी सारे भी कर रहा हूँ। अभी मवई का बिल्ड कंप्लीट हुआ है थोड़ा बहुत, अभी बाकी सारे कैरेक्टर्स को करेंगे क्योंकि अभी जस्ट भी मैंने अपना वर्ल्ड का लेवल भी बढ़ाया, मतलब एआर भी बढ़ाया। मेरा 45 पर लॉक हुआ रहा था, तो अभी जस्ट 50 किया है। पुड़ीना 38,000 HP, 56 का CR और 175 का क्रिट डैमेज। ये मेरा फ्लावर है, सैंड्स, सॉरी क्या बोलते इसको, फेदर, फेदर, गॉबलेट, सैंड्स, गॉबलेट, पुड़ीना। अरे लिव तू हमेशा अच्छा टाइम पे एंट्री मारता है रे। HP, अरे पुड़ीना दिल यहाँ से जुड़ा, यहाँ से बड़ा, यहाँ से, तो इसको अच्छा बिल्ड तो करना पड़ेगा ना। पुड़ीना तो यार बेस्ट आर्कॉन दिल में बसता है, दिल में बसती है, दिल में। और ये है सर्कलेट। शन्यून का बिल्ड मेरे को नहीं पता कुछ अच्छा है कि नहीं है। इसका 2.3 का अटैक है और निवलेट का भी आया थोड़ा कांड चल रहा है। इसको मेरे से भी अच्छा बिल्ड है। अच्छा, इसको मेरा बिल्ड देखा, पुड़ीना माय लव माय लेडी। हाय हाय शन्यून, दो दो कैरेक्टर है। अच्छा, पुड़ीना का भाई है क्या ट्विन ब्रदर? नहीं, पुड़ीना का भाई कौन है? दो दो पोप। तो ये कर ले। वाह, यू हैव न्यूवलेट, यस। मैं इसके लिए बहुत वेट किया था, अभी लास्ट जब बैनर पे आया था तब निकाला मैंने, दिसंबर में शायद से। हाँ, दिसंबर में आया था, तो तब निकाला था मैंने न्यूवलेट। नहीं है, न्यूवलेट है ट्विन ब्रदर। भाई मैं अभी तक वेट कर रहा। 5.2 मेरी पी 5.2 मेरी पीटी भी हिट नहीं हुई, इतना गंदा लक है क्या? 5.2 मावे, तेरा मावे का आर्टिफैक्ट का क्या सीन हुआ?
मैंने तो फरवरी में गेम स्टार्ट किया है। क्या बात कर रहे हो? तो यार 56 तक कैसे पहुंच गए? माहुई का आर्टिफैक्ट पोपो लक है। अच्छा, आई कीप ग्राइंडिंग ब्रो। अच्छा, लेवल अप करते गए। अभी मेरा न्यू वॉलेट बिल्ड करना पड़ेगा। न्यू वॉलेट का बिल्ड सही नहीं है। ये 300 प्लस लेके जाना पड़ेगा क्रिट डैमेज को। इसके आर्टिफैक्ट भी कुछ खास है नहीं। और ये था मेरा मेन अब तक का, मिस्टर गामिंग, द बेस्ट 4-star character you can ever have. I have nothing left except exploration. Okay. HP लो न्यू वॉलेट भाई। हाँ मालूम होती। मेरा न्यू वॉलेट बिल्ड सही नहीं है, वो तो कह रहा हूँ मैं। क्योंकि इस पे मैं शायद से वो क्रिडा में से क्या बोलता है, इसका बिल्ड सही है नहीं, तो इसको करना पड़ेगा। इसका वेपन भी मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ। मेरा बेचारा गामिंग, इसका आर्टिफैक्ट मावोई का ने चोरी कर लिया, छाप लिया। आओ। वैसे लियो तो अपना अकाउंट मेरे को दे, मैं करके दे तेरा मावोई का आर्टिफैक्ट। ऐसे बोलता हूँ जैसे मेरे पास बहुत सारा टाइम है। अरे ये लैग क्यों हो रहा है इतना गेम आज? गुड बिल्ड स्टीजियन Oh, दिखा हुआ Shimon is- कुंडा। Oh, you're up. I figured you'd be taking a nap at this hour. स्टीजियन ऑनस्लॉट मेरा कुछ है नहीं खास। लेवल 8 तक ही क्या कर पाया मैं 200 सेकंड में, वो भी 200 समथिंग। Oh, yeah, perfect. First Moika, now Chaska. Did you come all this way just to make fun of me? Whoa, what a mess! You, looking for something? Well, I have those secret source automatons to thank for all this. Mawika wants me to come up with a solution. It's like she thinks I'm a miracle worker or something. But I'm not. So, to make up for the difference, I've been spending all day sifting through documentation. Anyway, what about you guys, huh? What curveball have you come to throw at me today? मैंने हार्ड 80 सेकंड खत्म किया है। अरे मेरा हुआ नहीं, मेरे पास तुम्हारे पास कर्क वगैरह है भाई। मेरा डीपीएस बस मावोई का और वो है न्यू वॉलेट। Well, Hold up. Is she a robot? We picked her up on the beach near the Flower Feather clan, along with this cryptix. Seems like a message intended for the West traveler. I am pulling Molani and signature with Cheska. वेल हो गया, लग ही रहा है। माफ करना। A cryptex? Huh. Still in one piece. I'm surprised you didn't try to blast it open. Let's see here. The Fontanian cipher disc, metal case from Liyue. Looks like this was cobbled together from spare parts, although the inner workings are pretty intricately designed. It's a good thing you didn't try and brute force it. Could be a tricky one, since it uses a combination of several different technologies. I could find out more by disassembling it, but that could potentially damage the contents and... तुझे दू अपना अकाउंट, हाँ दे के रख मेरे को।
I'm assuming it's not worth the risk, right? Must be a pretty important message if this is how they chose to transport it. Nope, I can get emojis from exploration and I will pull. Okay. The only other option is to get our messenger to tell us the code. Is that doable? Can you wake her up? हाँ वैसे फेब्रुआरी में चालू किए होगी तो एक्सप्लोरेशन बहुत बाकी होगा ना. Well, the device in her chest looks pretty similar to the core you'd find on a secret source automaton, but the other components, I've never seen anything like them in Natlan before. I'll see what I can do. Hang tight for a minute. Come home! Hey, you woke up! Huh, all I did was stimulate the core. I did not expect that to work. White. Flying object. Blonde. Traveler. Traveler. Paimon? भाई मैंने मॉन्स्टर एंड नेटलन एक्सप्लोरेशन खत्म किया है बस दूसरे एक्सप्लोरेशन है. ओके. Wow. You recognize us? भाई राजकमल बात मानो सिग्नेचर नेम पुल करो अगर F2P हो. हैं? सिग्नेचर नेम पुल करो. Task in progress. Deliver message to Traveler and White Flying Companion. Message location confirmed. Status delivered. You're pretty smart for a robot. Can you tell us the code for the message? Code? Oh, maybe not so smart after all. A code? You know, like a number that you put in to unlock the message? Memory. Missing. What? Memory missing? Yeah, there's always a snag. Is there anything else you do remember? Besides these two? Name. Memory missing. Oh, not again. Why would her memories be missing? Can robots even get amnesia? सिग्नेचर नहीं पुल करो. अच्छा सिग्नेचर नहीं पुल करो. क्या सिग्नेचर नहीं पुल करो अगर F2P हो तो. You said something about returning home earlier. Where's home for you? Any memories about that? Return home. Task in progress. Memory missing. Oh, so that's it then. Her memories are gone for good? Not necessarily. Judging by her reaction, it's possible that her memory integrity isn't compromised, just locked behind an isolation mechanism. Yeah, but what does that mean for us, though? In words we can understand. It means she hasn't lost her memories. They're in there somewhere, she just can't access them right now. Like, when you know something, but the harder you try to remember it, the more it gives you a headache. Is that what's going on? Bro, I am pulling signature cause it's good to make the game easy. We switch to character also, and the damage needed. Okay. Finding near synonyms for headache. Cognition module. Pain. Correct. Robots can feel pain too? कोई ना. But I am pulling at least Mualani, Furina and Arle and Mawuika signature weapons. आप अभी न्यू हो ना तो प्रीमोजेम्स बहुत ज्यादा है. अभी आगे जाके पता चलेगा. Well, बात तो pain can सही be a है. useful parameter. Experiencing pain is how baby humans and saurians learn what to do and what not to do. भाई I have many characters. In a similar vein, I've heard that a lot of highly autonomous machines are designed with negative feedback mechanisms for behavioral regulation. Whoa, slow down.
Could you simplify that for Paimon? No. Oh, okay. Well, if I call it a curse, is that easier to understand? Imagine if you're a big shot shaman from the Masters of the Night Wind and you send your disciple on an errand to the Flower Feather clan. Allah is the must, not Furina. Maweka is good. Okay, not Furina. Furina के weapon की जगह constellation करो. बात तो सही है. To stop him from treating it like a vacation, you might put a curse on him that causes a physical and mental breakdown if he strays from the right path. That way, you can be sure he'll stick to the straight and narrow and won't go frolicking off. Jeez. Sounds like the horror story version of Granny Story that parents tell their kids about. Shit. The point is, manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. T2 Furina will be your best investment. Hey Chirag, what's up, man? Long time no see. Welcome to the stream. What's up? Gamble 1000. वाह है तेरे पे पॉइंट. एक बार पहले पॉइंट तो चेक कर लिया करो. I am pulling Molani signature. It is the most good weapon. Okay. Hi dude. Hello. क्या हाल चाल boy? घर पे ही है कि वापस आ गया जहाँ पे रहता है? Yeah, but why would you curse a machine to lose their memories? What purpose could that possibly serve? In her case, all it's done is make it harder for her to complete her tasks. I have more than enough though. हाँ? सच्ची. मैं चैट में लॉयल्टी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ. एक बार करके तो देखो, पॉइंट्स लिख के तो देखो क्या आता है. होना तो चाहिए. उस दिन तुम और वो तो कर रहे थे फ्रैगर टट्टी. Which 5-star do you have? ML all. लियो भाई का आईडी दिखाओ भाई. ओके दिखाते हैं उसका आईडी भी. रोल टू. अरे यार हार गया. मी ब्रो. Task failed. Sincere apologies. शायद से कूल डाउन होगा रे चिराग. मे बी नॉट श्योर बट शायद से थोड़ा कूल डाउन है. Knowing the exact details of the curse, it's anyone's guess. It seems you responded to the phrase "return home." How about we keep talking and see if any other keywords trigger something for you? Sure. I'm all right. I have assessed the pain level as tolerable. I must complete my task. Hey, traveler, have you ever seen a humanoid machine like this? Anywhere else you've been? Ah, of course. Yeah, some of her joints and a few components look pretty Fontanian to me. I have Kazua Furina Veresh. I have Kazua Furina Veresa Kinich. Mavika Sitlali Silonens Coffees Kirk आया तो. पर आया तो तुम तो फेवरेट में चालू किए थे. आया तो का रिटर्न कब हुआ? मेरे को तो याद नहीं है. मेरा ये वाला अकाउंट न्यू है और कैजुअल बिल्स है. अच्छा उस दिन तो रिमूव करा था कूल डाउन. हाँ शायद से 60 सेकेंड्स का अभी भी रह गया होगा उस पे. देखता हूँ रुक जा भाई. इसको देख. फेब में आके भी इतने कैरेक्टर्स. लक हो तो ऐसा है ना. क्रॉनिकल मिला था. लूजिंग 50 काजुआ. अच्छा आया तो क्रॉनिकल से. ओके ओके समझ गया. एक सेकंड जरा देखने दे मेरे को कि का सीन है ये. उसका टाइम लिमिट है कि कूल डाउन है क्या वो देखने दे मेरे को. वेट for a moment. Your primo gems will be arriving soon.
Please wait for a moment. Chat, cloud bot. इधर आ गया ही है. हाँ 45 सेकेंड्स का है. 45 सेकेंड्स देख, इसीलिए मैं कम नहीं किया उसको. Yes, I am newbie bro. You can see my UID numbers. Bro, you have better luck than me. Do what do you want? Pull in every banner, I guess. I am sorry I said anything. Wait, see my UID. अंकित भाई दिखाओ. रुक जा, ये कट से मतलब ये क्या बोलते हैं? Fontaine. They make good pastries there. ये नहीं, जब तक नहीं जाएगा डायलॉग्स तब तक तो नहीं दिखा सकता ना. दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जा. That triggered something. Hey! Never mind that. So, is Fontaine your home? No. Oh, okay. Well, that's one promising lead nipped in the bud. You mean her hairpiece? Oh, yeah, I think I know what you mean. What do they call them in Mondstadt again? Mondstadt. The maids there are very hardworking. That's it! A maid! Although, as far as Paimon's aware, the maids in Mondstadt are all fully human. वेट ब्रो, लीव अंकित भाई स्किप कर दो. अरे नहीं भाई, मैं आर्कॉन क्वेस्ट का स्टोरी स्किप नहीं कर रहा. माफ करो मेरे को. बाबू कोई दूसरा क्वेस्ट होता तो स्किप कर देता भाई. इसको क्वेस्ट करने दो. नथिंग स्पेशल क्वेस्ट है. मेरे अंदर ले लो. हैं हैं क्या कह रहा भाई? लीव हेलो. वैसे अपना चिराग किधर गया? A maid. Okay, that would explain a lot of the internal design choices. So, you're from Mondstadt then? No. How come she responds so much faster when the answer is no? Natlanese core, Fontanian joints, Mondstadt hairpiece. Maybe no single nation is her home. She's just like the cryptex in that sense. In that case, Good. where exactly is home to you? Is it where you were built? Where you live most of the time? Or a place you can always come back to? Home is just home, isn't it? Okay. Feels like this is getting us nowhere. भाई Any कहा other गया तेरे को? ideas, लीव. Shonen? How do we get her memories back? If her cognition is impaired, maybe her body is the place to look. I found a lot of interesting things when I was examining her just now. Do you remember this little robot? Apparently, you were together when they found you on the beach. Oh, Nice. So you remember how to switch it on. Now, could you try doing something similar to your right arm? is this a broom? Wait, she really is a robo-maid? भाई निकल यहाँ से. अंकित तू खेल. अरे अरे चिल भाई चिल. यूआईडी भाई टाइपो. भाई बा ओके भाई चिल ब्रो. लीव. ऐसे नहीं बोलते किसी को भाई. निकल यहाँ से. क्या होता है? ऐसे नहीं बोलते ब्रो. Wow, very good indeed. Now then, could I trouble you to tidy up my workshop? चिल्लाने ना लीव. Are you serious right now? Well,
If she's a robo-maid, maybe doing some household chores will jog her memory. Yeah, just, this area will do. Thanks. No need to tidy the whole workshop. Hey, come on! The poor thing's only just woken up. Don't you think this is a bit much? Understood. Commencing task. Sorting large objects. She's really doing it. Well, Her guess design this is counts as good, bro. progress. Let's see if it leads anywhere. इसके हेयर मस्त है, हेयर बंस, नाइस. Defensive mode engaged. भाई गेम का एमएस इतना हाई क्यों है? भाई चार्ज अटैक बढ़िया है रे. भाई गेम का एमएस इतना हाई क्यों आ रहा है रे? Cleaning floor. Cleanup sequence initiated. वैक्यूम क्लीनर? Defensive mode engaged. वैक्यूम क्लीनर, हेलो? Cleanup sequence initiated. Dude, excuse me? जाता हूँ, निकलने को बोला है. अरे अरे अरे, गलत बात, गलत बात लियो, गलत बात, ऐसे नहीं बोलते. नहीं भाई, जितना देर तक रहने का मर्जी है रह सकते हो आप. Sorting small objects. Outlander Brigade. When the wind of death blew towards the blonde samurai. Wait, isn't that a light novel that Seat Lolly left here by mistake? The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat sunsetias to become stronger. Discusses energy acquisition from the sunsetia fruit. Category: Nutritional Science. एनेफा का रोबोट फाइट के बाद बैटलफील्ड क्लीन करता है. क्या बात कर रहा है? बस स्किपिंग आर्कॉन क्वेस्ट इज इनएक्सक्यूजेबल. आर्कॉन क्वेस्ट तो स्किप नहीं हो सकता भाई. Introduction of Ancient Machines. Grammatically elegant and rhetorically sophisticated, author displays a high level of linguistic mastery. Category: Classical Literature. What in the world? That isn't classical literature. पर ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी को भाई, निकल निकल, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलता है. She's finally done. Huh? Is that a woven scroll down there? Oh, looks a little dirty. Could you clean it up? Understood. Cleaning woven scroll. Wow, it's like it's brand new. Hey, इसकी this looks like someone from the Children of Echoes. Shilonen, is this a relative of yours? अच्छे अच्छे, वाह, अच्छे से नहीं बोल सकते. अरे अरे, माफ कर दो उसको. मैं माफी चाहता हूँ उसके तरफ से. माय मिस्टेक. निकल नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी. अरे ले सॉरी बोल, सॉरी मांग ले इसने, माफी मांग ली. डायरेक्ट गाली, अगर गाली नहीं कहा दी है उसने, बस निकल बोला था. पर वो भी गलत है, पर ठीक है, माफ कर दो उसको. लेकिन आर्कन को स्किप नहीं करते, हाँ ना. गाली कब दी भाई? अच्छे से नहीं बोल सकते. अरे माफ करो गाइस.
प्रॉब्लम खत्म करो. A relative? No. That's Ishkik, ancient name Baraka, founder of the Children of Echoes and one of the 6 heroes. Hi Anit, what's up boy? What's up dude? Welcome back. क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं है, जरा आर्कन क्वेस्ट चल रहा था, इसने बोला था कि स्किप कर दो, तो उस पे लीव गुस्सा हो गया, खिसक गया, तो बोलता है तू निकल यहाँ से, तू मेरे को बोलता तू क्वेस्ट कर. तो ठीक है, वो गलती हो गया उससे, माफी मांग लिया उसने. राजकमल माफ कर दो उसको. कूल डाउन भाई लोग, आना. अरे सॉरी ना भाई, आपने बात थी एग्जिट कर दी. Wait, Baraka? Isn't that your ancient name too? Yep, she was the first recorded bearer of that name. She and her friends went on a mission to defeat the Pyro Dragon. She dismantled many ancient machines built by dragonkind, hoping to put them to use for the good of humanity. ऐसी कर दी. But most of her research was lost to history. It's a real shame. I'm कोई ना भाई, sure chill we'd all करो. have Yeah much guys, easier lives chill if we करो, had chill करो. access to Yo. all that tech. What happened? Useful stuff like that normally doesn't just get forgotten. बिल्ली में बक्सा. Ochkon happened. An old friend of the 6 who ended up ruling Natlan shortly after the war and went full tyrant. He despised everything to do with dragonkind and persecuted everyone who showed any kind of sympathies toward their civilization. He even turned on Ishkik, one of his closest allies. Ultimately, she took her own life, bringing a once amicable friendship to a tragic end. अंकित को तोड़ दो भाई, मेरे को क्यों तोड़ना है भाई? हेलो, मेरे को क्यों तोड़ोगे? मैंने क्या कर दिया? गाइस ट्राइंग को लाइक मारो भाई. ट्रूली माय मिस्टेक. आर्कन को स्किप करना बहुत बुरा लगता है. अरे मैं खुद नहीं करता स्किप, मैं नहीं करेगा स्किप. Ishkik burned her workshop to the ground to make sure Ochkon couldn't get her hands on it. That's the reason most of her research is lost to history. तो मेन बात यह है, मैं खेलता हूँ ये इसको स्टोरी के लिए, तो भाई इसका स्टोरी नहीं जानूंगा तो कैसे होगा? स्किप करके क्या होगा? That's right. One of her friends managed to preserve a small amount of her work. The other person you see on that woven scroll, the same person I inherited the ancient name Vuka from. It was said that she was raised by a dragon mother, then went on to found the Flower Feather clan. The uncrowned queen who brought freedom to the weak and to the persecuted Saurians, the Yonka. चलो कोई दिक्कत नहीं है. Here it comes. This is not the way. This is not where you belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? हेलो हेरल, 75 PT still nothing. अरे हो जाएगा, हो जाएगा. What's wrong? Are you okay? Stay back. अरे ये थंबनेल के लायक फोटो है. अरे स्कूबन स्क्रोल जल गया भाई. If she's a robo-maid, why is she suddenly acting like a lethal weapon? Ah! What's that sound? A lightning strike? It's gotta be a lightning strike. Why couldn't it hit Kniech on the head? अरे एनोइंग, चुप हो जा भाई. नेटलैंड के 4 एरिया 100%, 2 एरिया 99%, 2 रीजन बचा, उसमें एक इवेंट है. और कितना ग्राइंड करूं? आई गॉट सिटलाइन 8 PT. देख रहा है, देख रहा है, लाइक लक हो तो ऐसा. If there was a lightning storm, I'd have thrown you into the sky by now. Aoife mentioned that you'd brought a humanoid machine to the Children of Echoes. I'm working a job at the moment, and the description was a good match for my target. Humanoid machine.
Looks like a maid. Highly destructive. Yeah, this is my target, all right. Wait, Kanich! Just hold off for a second! A group of merchants tasked me with locating their missing travel companion. They should be here soon. Want to come and meet them? Huh? What did you think I was about to do? Not every job I take on is a hunt, you know. All right. जलता है साला। अरे क्यों ना जले भाई, हमको यहाँ पे 80 पीटी पे मिल रहा है चीजें, तुमको 8 पीटी पे मिल रहा है। गॉट डिलू कैचिंग दिया ओनली एट स्टैंडर्ड बैनर नेवर गॉट चीची। ओके, अब नेक्स्ट तुम्हारा चीची होगा इसका मतलब। माफ करो माफ करो। मैंने भी यही बोला। आई लक अलग है हमसे, इसका लक। हाँ, इसको नहीं रोकना। अरे बिल्कुल नहीं रोकने का राज भाई, सबका लक आपके जैसा नहीं होता। मी हैव 6 टिग्नारी। हाँ, मेरा लक ही ऐसा है भाई, तुम्हारा लक बहुत सही है। Keep it up। ऐसे कभी कभी स्ट्रीम पे आके हमको भी अपना लक थोड़ा उधार दे दिया करो जब हम लोग बैनर पे पुल्स करेंगे। डी लव्स मी डिफेंस एंड दिया। यार दिया तेरा फेवरेट है। ऐसे मैं भाग भाग के क्यों जा रहा हूँ, टेलीपोर्ट भी तो कर सकता हूँ। एक सेकेंड लीव वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय डी लव्स मी? मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारी सोच गंदी है। और ना वही का बिल्ड है, देखोगे देख लेंगे। वैसे लिव का एक बुरा भी है। गॉट इनेफा वेपन ऑन शीतलिस वेपन। टिग्नारी टाइनारी होता है। नहीं, मैं उसको टिग्नारी बोलेगा। टाइनरी में उसको पहले ही बोलता था, पर फिर मैंने चेंज किया था जानबूझ के। यूआईडी ओके, यूआईडी मेरा दिखाओ अंकित भाई लिव को। अरे दिखाते, रुक जा 2 मिनट। Yay, Ineffa! Ineffa! They found you at last! Thank goodness you're okay. Okay, so they are from Nod-Krai. Hello. The dresses looks good. This purple one. This dress looks good. I like it. Not pulling in Ineffa. Okay. Who are you? Oh no, your memory's gone again. Even your name this time. Again? ये लोग मेंढक। Liu, Fontaine, Sumeru. This is quite a diverse crew. So, are you her manufacturers or family? No way. None of us have that kind of skill. She's Aino's handiwork. Fontaine। अच्छा, मैंने तो क्वेस्ट तो किया ही नहीं है। अरे ये लोग है नहीं, ये लोग अलग अलग जगह से हैं। I know. From now on, your name's Ineffa. Promise me. Remember, you have to come home. Malfunction. Oh, might luck fall for me. महादेव मेरा हेल्प करना to get Mualani's signature। मिल जाएगा मिल जाएगा। तेरा 50-50 अभी इस पे लॉस हुआ ना, तो नेक्स्ट तेरा गारंटी है वेपन बैनर पे। Ineffa, are you okay? Looks like she's getting worse. Is this all our fault? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। वाह, ऐसे नहीं बोल लगा। Tell us what all this is about? Where are you from? And what's wrong with with Ineffa? So sorry. I should have introduced myself. My name's Joachine, and I'm a merchant.
This is my wife and daughter, and the rest are friends of the family. We're all from Nod-Krai. Nod-Krai? Wouldn't have been my first guess. How'd you all meet exactly? That's the thing about Nod-Krai. It kind of brings together the drifters from all over the world. Yeah, we're all merchants who ended up finding our feet in Nasha Town. Nod-Krai. It was going okay until all the trouble started. Trouble? The Fatui. They came down from the north. They've made some big moves in Nod-Krai lately. It's caused quite a bit of friction with the local religious groups. That's one way to put it. You know what I heard? They pulled the whole moon down. Huh? Whole moon down? Okay. Nod-Krai low drop. Yeah, yes, बिल्कुल ये कोई दुआ लग जाएगा. Plus लगना the तो. incident with the moon statues? Surely the Frost Moon Scions aren't going to take all this light. Anyway, there us regular folks were just trying to make a steady living while getting increasingly worried that it's going to turn ugly. In the end, we figured heading back to our respective homes is probably the best thing for now. So we decided to make the journey together. I'm also going to Nod-Krai for making big moves. Okay. Me? All the best. Your case is, a little different. But you did come here on the same boat as us. And it was smooth sailing. Until we got attacked by those weird machines as we were coming into shore. Weird machines? Secret source automatons by any chance? Ineffa saved us all. She jumped off the ship and told us to leave without her. Really? I did that? As soon as we'd found another place to dock, we looked around for someone to help us. We'd have paid anything to get her back. Hence why our price negotiation went so smoothly. However, the Traveler and party were the ones who actually saved Ineffa. Very big reminder, don't pull Nod-Krai. क्यों ऐसा क्या दिक्कत है Nod-Krai में? Nani? And Shalonen is the one who woke her up. I'll have to include their costs in the final bill. Huh? Oh, please. I barely did anything. All credit to Ineffa. She only woke up because of her build quality, so I guess I should say all credit to this Aino, then? Her core is remarkably resilient. It's a rare find, even among Natlan's source mechanisms. Was Aino the one who modified it? Oh! If so, then we just need to get Aino to come here and fix her. Then she'll get all her memories back. I'm afraid that's not gonna work. The core is most likely just something Aino picked up on one of her scavenger hunts. I doubt she did much beyond salvaging it. And as for the memory thing, Ineffa's whole reason for joining us on our journey was to come to Natlan and look for her missing memories. Please, explain in more detail. All right. Although I've lost count of how many times we've been through this, and I'm only telling you what you originally told me. Although Aino built you, she never could figure out where your core came from or how it works. The only thing she was fairly sure of was that it's not from Nod-Krai. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. Until one day, you were sweeping the floor, and suddenly you forgot your own strength. Nearly took the entire wall down. क्या बात कर रहे हो? अच्छा ना, okay. क्या Nod-Krai characters are like Raiden Shogun? John, robot है क्या ये लोग? Natlan is good place. Natlan is the good place. Hey bhai, क्या हुआ? And you don't know Nod-Krai's characters like Lauma, Colomina, Alice, Varaga, I know. Get introduction किया तो था जेंसिन वाले ने नाम याद नहीं है ब्रो. वैसे क्या दिक्कत है मेरे को भी नहीं पता इतना. Nod-Krai में क्या दिक्कत है इतना बड़ा कि ऐसे बात चल रहा है मेरे को भी नहीं पता. मेरे को भी लाइटन अप करो मैटर पे. The worst part of that was, Ineffa had completely forgotten that Aino was on the other side of that wall. Huh? Aino was fine, of course, didn't bat an eyelid. But since then, Ineffa has been searching for a way to try and repair herself. Anyway, a bunch of mechanical parts from Natlan showed up in Nod-Krai recently, and you noticed they bore some similarities to your core.
Then you learned that a group of us were planning to return home, stopping off in Natlan on the way, so you tracked us down and joined the crew. Well, does any of that jog your memory? No. Daddy. But you will know it in the future. Alive, Alice and Varka to monster थे ना. Alice, yes, but they live in Nod-Krai. So Nod-Krai. Didn't think so. Has her memory loss always been this serious? No. When we first set off, she'd have the occasional memory lapse, but it only lasted a moment. Didn't really affect anything. I seriously doubt Aino would have let her come on this trip if it had been that bad. But then, the closer we got to Natlan, the worse her symptoms got. She was already in a pretty bad state by the time she went to fend off those machine things. And now, I want... Poor Ineffa. My friends, I know we've only just arrived in Natlan, but from what I've heard, you're some of this nation's top talents. Is there anything you can do to cure her? Anything at all? ये क्या बात हुआ? हाँ ना, ये क्या बात हुआ? बताओ डिटेल्स में बोलो. Well, you pull not I like people wasting their primogen. Perhaps coming to Natlan was a bad idea after all. अभी फ्रैगर आएगा ना चैट पे, देखो आगे क्या करेगा. It's too early to say. Don't forget that before I was interrupted by you guys, I just started my deep dive into researching the secret source automatons. My job isn't done yet either. You wanted your travel companion back, safe and sound. I still have work to do. So, why don't you all stick around here in Natlan a little longer? Your ship got attacked, and since then, you've been scrambling to try and find your missing crew member. Sounds like you need some time to catch your breath. Yeah, I was just thinking, we could do with a breather. But where would we stay? How about the Flower Feather Clan? In my tribe, weary travelers are always welcome. Flower Feather Clan. काजुआ हम लोगों को लियो में मिला था, तो फिर काजुआ लियो क्या हुआ? पॉइंट तो है भाई. नो, he lives with Bedo. इस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस यहाँ तक की लाइन ठीक है. In the meantime, we'll try to find whatever information we can about Ineffa. After all, she has a message for our Tumaini. So this is as much our business as it is yours. Oh yeah! Paimon had practically forgotten all about that. You guys don't happen to know the code, do you? Oh, the code for the cryptex. Sorry, Ineffa wouldn't tell us anything about that. You gotta wonder what sort of a person sends a robot with amnesia to deliver their messages. Just like Toma, he is from Mondstadt, but he lives in Inazuma. To be fair, they couldn't have known things would get this bad. Also, Ineffa told me she had a backup plan to make sure she wouldn't forget the code. A backup plan? Great! So what is it? Backup plan. Memory missing. Huh. Well, as long as we get her memories back, that'll solve everything, right? Oh, yeah, okay, because it's that simple. Wait, you do realize I can't promise anything, don't you? I do. I also know that every time you say that, you end up getting the job done. I'm gonna get in touch with some other people who might be able to help us. Tumaini, Paimon. See you around. Okay, तो फिर हम लोग ट्रैवलर का नाम तुमाइनी परमानेंट रख दिया जाए. भाई ये लियो भी नहीं है भाई. 9:12 हो गया. ओके, जा रहे हो? ओके, बाय बाय, सी यू अराउंड. ये बंदा लगता है जेंशिन इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट से, पता है कि क्या है. जस्ट किडिंग भाई. Bye, Kanich! Oh, and bye, How. Actually, that's weird. Why is a How so quiet today? You're being very strange today. Am I? Tell me one strange thing I've said! That's the strange part. You haven't protested to anything I've done today.
Not the original price for the job, not the revised timeline, none of it. That's because I fainted from your stupidity! You stupefied me into a stupor! Got it? Something is the problem. Is something wrong with my memory? Or is that really who I think it is? हैं? How जानती है उसको? Who cares? She isn't my problem. The last few days really flew by. You think Ineffa and the merchants are enjoying their stay at the According to farm the while they're justice of the Let's go Oratress see how they're mechanic doing. Generalist Cardinal. भाई सोना 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 है, इतना जल्दी सोना जाओगे? बाय द वे लास्ट ये लाइन बढ़िया बोल के गए, आई लाइक इट. According to the justice of Oratress mechanic Generalist Cardinal. According to the justice of Oratress mechanic Generalist Cardinal. इसका आईडी देखते हैं. चलो तुमने तो मेरा को ऐड पे ने एक्सेप्ट किया नहीं होगा अभी तक, मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा फिर तुम्हारा यू आईडी. How but pronounced as how. How. What is English not Englishing. फिर इसको भी तो बोलेंगे, इसका हम बोलते हैं वाटर, पर इसका प्रॉपर वो होगा वाहा वाहा वाहा. क्या बोलते हैं उसको? वाहा वाहा बोहल. 8 9 2 2 3 4 6 7 3. लिव भाई किधर गया? लिव मर गया. ये पानी खोल देगा. जस्ट किडिंग. पर प्यू को दिखाओ. प्यू नहीं, वो लिव है. ओए बटरफ्लाई है लिव. वाह है ना? वाह इट्स वाह. It's not water. It's water. I'm drinking some water. वैसे ही सीन है. आहाओ लीव तो है ही नहीं भाई. रिक्वेस्ट भेज के रखा है, एक्सेप्ट कर लेना. उसको कल दिखा लूंगा. मर गया क्या? क्या मालूम भाई. बिजी होगा कहीं पे. रिक्वेस्ट भेज के रखा, एक्सेप्ट कर लेना. मैं हमें दिखा दे. अच्छा तू देखेगा? बोल चल फुरीना से चालू देख ले. मैं इसका एनर्जी रिचार्ज देख, मेरे को भी चाहिए इतना एनर्जी रिचार्ज. तो R5 भाई बंदे ने फिशिंग तो किया है, मछली तो पकड़ा है बंदे ने. ठीक है भाई. 30 688. Okay, that's full enough for you. And this is Cutie Pie Fairesha. Why Imaginarium Theater 6 done? That also 3 star. Characters कम है शायद. हाँ हो सकता है. This is our Cutie Pie Fairesha. नेक्स्ट ये स्क्रीन से हटा दें इन लोगों ने. कितना AR है? 56. नेक्स्ट बैनर अगर वेरेसा का आएगा तो मैं पुल करेगा. मुझे पसंद है ये प्लंज अटैक. पूरा काजुआ के एलिमेंटल मास्टरी बढ़ाओ बे. बस 700 है. क्या लगा के रखे हो? 4 पीस भी नहीं है भाई. 4 पीस वीवी लगाओ काजुआ पे. क्या कर रहे हो?
एनिमल डैमेज बोनस इसलिए ईएम पकड़ा उसको 6.5 अटैक। भाई काजुआ से क्या करते हो रे? बिल्ड ही नहीं है काजुआ, इसका मतलब। शिलोनेन आपका यार नहीं, जिसका अकाउंट है उसका यार, उसका ही बोल रहा हूँ। मेरा तो 50 है, इसका 56 है। ये देख 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 ले, राजकमल 56 देखा। काजुआ का बनाओ, काजुआ का वो हटाओ, क्या बोलते हैं इसको, ये सर अटैक का जरूरत नहीं है, ईएम लगाओ। अब 4 पीस भी तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो काजुआ का काम क्या है। इसको भी 4 पीस वीवी पे ईएम लगाओ, वीवी का ईएम, इस पे भी वीवी का ईएम लगाओ, और इस पे भी वीवी का ईएम लगाओ। ईएम इज इम्पोर्टेंट। बाय द वे मुझे सिलोनेन का नहीं पता, तो क्या लगता है शायद से डिफेंस पे स्केल करती है। यार 56 के हिसाब से अच्छा है। डिफेंस सर्कलेट आए हाय, क्या सर्कल सर्कल सैंड सैंड, माफी माफी, गलती से होगी, गलती से निकल गया मुंह से। ठीक है, सेलोडन का तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर देख के तो लग रहा है ठीक है, बिल्ड अच्छा है। ओके, अब स्कर्क पे चलते हैं। स्कर्क 36207 का सीडी, क्रिट वैल्यू कितना है नहीं मालूम। इसका ईआर नहीं पता मेरे को। क्रायो डैमेज बोनस बस 15% क्यों है, क्या सीन है? क्रिट डैमेज सर्कलेट, अटैक गॉबलेट, अटैक सेंस। इसको क्रायो डैमेज बोनस सेंस नहीं लगता। फिनाले ऑफ द डीप गैलरी, उसका सिग्नेचर। और इसका क्रायो डैमेज लगता है ना, क्रायो डैमेज बोनस लगाओ इस पे। ये तो ठीक है, अच्छा अच्छा पीस है ये तो, ये भी ठीक है। फ्लावर ऑप्टिमाइज हो सकता है, आई डोंट नो, मैं बता रहा हूँ इसको। इस पे क्रायो डैमेज बोनस लगाओ, इस पे अपना क्रायो डैमेज बोनस एक तो लगाओ, और अटैक तो ठीक है। यहाँ पे फ्लावर ऑप्टिमाइज करो, फ्लावर पे काम जरूरी है। क्रिट डैमेज क्रिट रेट का थोड़ा सीन है, वो सही करो। और सर्कलेट भी ठीक ठाक है। ये दो चीज इंप्रूव हो सकता है, एक फ्लावर, दूसरा सर्कलेट, और एक क्रायो डैमेज बोनस। ये वाले सेट पे 60 क्रिट रेट मिनिमम ट्राई करो। 36 है, इसको 60 जाने का ट्राई करना बोल रहा है ये, तो देख लेना। इसको नॉलेज होगा, मेरे पे नहीं है, इस पे नॉलेज है। मावुई का 32,212, ओके ठीक ठाक है। अटैक कितना है? 1600। इसको 2K के आसपास ले जाने का ट्राई करो। कॉस्फेयर का कॉन्स्टेलेशन लेके रखा है, C1, और इनेफे का वेपन। क्या है ये? प्राइमोडियल सी। मावई का तो देख लिया, आयतों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अरे ये कहाँ से मिला था रे? ये वेपन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, मुझे नहीं पता। हाँ, गोल्डन ट्रूप ग्लैडिएटर।
हेलो पंकज, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्स अप ब्रदर? माउई का 4 स्टार वेपन के साथ अटैक ठीक है, ईएम ठीक है, स्टैट्स बेटा ट्राई करो। क्रिट डैमेज क्रिट रेट बढ़ाओ। भाई मेरा राइडेन का 60% क्रिट रेट और 150 का क्रिट डैमेज है, तो 50% का ईआर है विथ कैच, बट अटैक 990 है। ये चलेगा? अनित जरा बता ये कौन सा वेपन है? हाँ ना, मैं भी नहीं, पहली बार देखा ये वेपन, देखा नहीं है कभी भी। है कौन सा? जरा गूगल करते हैं, रुको जरा गुलू गुलू करते हैं हम। कौन सा ये? स्टर्डी बोन। नहीं मिला। गॉबलेट भाई इलेक्ट्रो डैमेज बोनस का फैंस ईयर का है, ये यूज कर रहा, और क्रिट सर्कुलेट क्रिट रेट का कैच वेपन के साथ अटैक गॉबलेट यूज करो, बेटर रिजल्ट देगा, बिकॉज कैच गिव्स डैमेज बोनस, गुड वेपन फॉर आया तो मैंने पहली बार देखा है वेपन। तो काजुआ का सही से बिल्ड कर लेना, काजुआ का आर्टिफैक्ट वीवी लगा, वीवी, और शीतलाली वाला भी कर लेना सही से, बाकी तो ठीक है। गाइस स्ट्रीम को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है? बदतमीजी नहीं चाहिए, स्ट्रीम को लाइक मारो इज्जत से, लाइक ठोको। Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. अरे 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 बच्चों का सीन, तो मेरा एमएस इतना हाई क्यों है? कौन सा सर्वर पंकज भाई? यूआईडी दो अगर ऐसे सर्वर है तो। मेरा पिंग आज बहुत ज्यादा है, 510 का पिंग आ रहा है बे। गाइस 409 409 सब्सक्राइबर्स है। चलो चलो एक और करो 410 का टारगेट है हमको, बस एक और चाहिए 410 सब्सक्राइबर होने में। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया हो तो किसी ने। इस बार तो मैं न्यूवेलेट का सिग्नेचर एंड फ्रीना का सिग्नेचर निकल के ही रहूंगा, पूरा नॉट करे कैरेक्टर्स को स्किप करूंगा। ओके बा, ओ भाई मेरा भी बहुत हाइपिंग है ना? मैं देख रहा हूँ तो आज कुछ ज्यादा ही हाइपिंग दे रहा है, 500 के ऊपर। कैरेक्टर स्विचिंग में भी टाइम लगा रहा है।
गाइस क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हमारे को बस एक और सब्सक्राइबर चाहिए 410 होने को, तो Instead of करो confining सब्सक्राइब करो। themselves to the heavens, और हम बस कितना, सात सौ 800 सबर कराइब, हाँ ना, सबर कराइब करो बे। एक बार गेम रिस्टार्ट करो क्या, God should rock. एक बार गेम रिस्टार्ट करते हैं। दोपहर को तो सही हो गया था। गाइस किधर किधर भाग गए साले, सब्सक्राइब के नाम पे भाग जाते हो, शर्म नहीं आता तुमको हैं? हमको बस 91 सब्स चाहिए गाइस, 91 ओनली, फिर हमारा 500 सब्सक्राइबर वाला गोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सर्वर पे, हम चैनल पे करेंगे गिव अवे छोटा सा, और फिर तो सारे चीज आएगा ही। भागो हाँ ना, बदतमीज इंसान, सब्सक्राइब के नाम पे भाग जाते हो। जस्ट किडिंग। डिस्कॉर्ड पे कोई बैठा है क्या? नहीं, डिस्कॉर्ड पे कोई नहीं है। मैं नींद आ रहा है जोर से, ज्यादा रात तक स्ट्रीम नहीं करूंगा। गाइस हमको 2 लाइक्स चाहिए, और 2 ओनली, 2 लाइक्स चाहिए और 1 सब्स चाहिए, तो सब 10-10 हो जाएगा। चलो चलो फटाफट फटाफट करो। यूआईडी मावुई का, बिल्ड इन प्रोग्रेस मावुई का, ओके। इतने दिनों तक तेरा आईडी मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं था, वाह रे वाह। कैप्टन हूं मैं शिप की। एक डिसेंट फेदर मिल जाएगा तो ऑफ पीस हटा के सैंड चेंज कर देगा। अच्छा, 10 फ्रेजाइल यूज कर दिया, कुछ नहीं मिला भाई, फिर तो लीव का भी सेम सीन है मावुई का बिल्ड करने में। ये देख ये देख, इमेज थोड़ा स्टेबल हुआ, स्टेबल देख रहा है।
मैच चालू है ना? हाँ। अरे भाई क्या सीन है इसका। टिडू। फिर इमेज जा रहा है ज्यादा। Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. सफाई नहीं देना चाहूंगा भाई, सॉरी। मेरा महुई का आ रहा जी, मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी। 817476 010। मावू 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 ये रहा। ओ भाई 240 नाइस नाइस। 41 भाई कौन सा माइक यूज करते हो स्ट्रीम के लिए? क्यों भाई कोई दिक्कत है? ये माइक अच्छा है पहले ये बताओ, उस हिसाब से आंसर दूंगा। वाह वाह 1600 वेपन ट्राइडल शैडो R5 नाइस नाइस। नीशे नीशे ओ बाय गॉड, तो ऑफ पीस है, रोल है। मुझे भी माइक लेना है, वैसे मेरा माइक ये है, ये इसका ये वाला माइक है यूज करता है, ये वाला हेडफोन का जो खुद का है। EM सेंस क्रिट डैमेज, इस पे क्रिट रेट हो जाता ना मजा आ जाता। चलो पायरो डैमेज बोनस, ओ भाई क्रिट डैमेज पे रोल, नाइस। पर क्रिट रेट भी एक भी नहीं गया, सो सैड। क्रिट डैमेज क्रिट रेट निश्चय निश्चय अच्छा तो है तेरा, बस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। 90 है ना तेरा? क्राउन नहीं किया अभी तक। मोरलेस बिहेवियर स्कर्क 63 भाई। आप बेचारा आएगा का वेपन इसके पास जाड़ी। मारा सूर्य हंटर यूज करता है तो इस पे ओके।
क्राउन टैलेंट वाला इवेंट आता है उसमें कर लेगा। टैलेंट वाला इवेंट वो जिसपे डिस्काउंट पे मिलता है। टैलेंट वाला इवेंट कौन सा होता है बे? मेरे को ना पता। आउट ऑफ नॉलेज स्टाफ ऑफ होमा इनक ऑफ लाइटनिंग। वाह वाह सिग्नेचर टोम ऑफ इटर्नल फ्लो। ओ ये सिग्नेचर बिचारी। वैसे पब्लिक यूजर माइक लेना है, सिर्फ माइक लोगे। PS4 के लिए जेंसिन क्लोज हो गया, वो गया नहीं, नेक्स्ट साल होगा अप्रैल 2026 में। भाई अनित एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? कमीना इंसान। Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Do you think Ineffa will like this gift we got her? See? See? It said yes! Are you sure? Because when I asked it who's the better hero, Ishkik or Leonka, it gave the exact same answer. Hey, you hear that? That's the answer it gave when I asked who'd win in a fight between Kukuku and a How. You guys, it's just making random beeps. Whoa! Is that Tumaini and the flying expert? What the hell? Flying expert? Beep beep. Yes, it's us. Anyway, where's Ineffa? Probably out mopping up those mad machines as usual. There must be a lot of them, because she hardly ever comes back for a rest. Wait, all by herself? Are we sure that's a good idea after what happened last time? Ineffa said that since she lost her memories, her cognition module's been running more smoothly, and it's greatly boosted efficiency in cleaning and tidying tasks. So, losing her memories has somehow made her a better fighter? और बताओ सबका क्या चल रहा है? She's awesome! I saw her carrying a whole pile of beaten up machines in one hand! All the grown-ups say that they feel much safer leaving the house now, thanks to her. So, we thought it'd be nice to give her a little gift. We've tried giving her flowers and feathers, but it seemed like she didn't like them very much. That got us thinking.
maybe robot people don't like the same things as us. Uh-huh. So that's why you made her this flower out of mechanical parts. Yeah, we still don't know if she'll like it, though. It's okay, Arieta. She'll love this one. I'm sure of it. But what if she doesn't? This might be my last chance. Well, now that all of my mom and dad's other friends from Nod-Krai have left to go home, it's just us left. And they said today, it's our turn to go home too. Already? Wasn't the plan to stick around until Ineffa gets better? Dad says everyone back home is expecting us, and he doesn't want us to overstay our welcome here. He thought we should at least make sure Ineffa wasn't getting any worse first, but now that it's been a few days, he says it's time we made a move. To be honest, I can kinda understand. He hasn't been home in so many years. Mom and I can tell that he misses Liyue a lot. Ah, no wonder. So, what about your mom then? Guessing she's not from Liyue. No, she's from Nod-Krai. She met my dad after he moved there. I was born there too. Liwa. He's been there the whole time I was growing up, so he hasn't been home in at least 10 years. Don't worry. We'll write to you and let you know how Ineffa's doing. You bet. And when she's all better, we'll bring her to visit you in Liyue. Yeah, so don't worry too much about the flower. I'm sure she'll love it. But even if not, you'll have other chances in the future. Although, I guess we still need to wait till she gets back. I wonder how much longer she'll... Who knows? Seems like she takes longer and longer every time she goes out. Can't we go take it to her? No, wait. The grown-ups would never let us do that. Way too many of those mad machines out there. What am I gonna do? If she doesn't get back soon, I might run out of time. Oh, really? Thanks, Tumaini. Look for Ineffa. Ineffa, कि तुम किधर होती? Ineffa डार्लिंग, तुम किधर होती? हम तुमको ढूंढती. कर लिया, वाह. What is she looking at? Threat eliminated. Scanning for next target. Ineffa! Traveler, Paimon. Annihilation mode disengaged. Chat mode activated. That's nice. Chat mode, huh? Huh. You'd probably get along well with a Fontanian magician friend of ours. She does modes instead of moods, too. Good morning. Nice to see you again. Morning? What lovely weather we're having. What? Hey! Don't you start too. One robot's enough. These are some standard greetings I learned recently. 3 greetings in a row equals thrice the greetment. Hypothetically speaking. Where did you get greetment from? Never mind. You're doing a whole lot better than the last time we met. Yes. My cognition and language modules are recovering well. I can now sustain fluid conversation, but I have still been unable to retrieve the memory containing the code to the cryptex. I will keep trying. Sincere apologies. Yes, now that a convenient moment to change the topic has presented itself. What is that object in your hand? A new model of source mechanism? Flower. Flowers are plant reproductive organs. But I detect no signs of life. It's more like a flower built from mechanical components. Understood. A flower-shaped machine component. What is its function? Which module is it designed for?
Is it compatible with my hardware? It doesn't have a function. It's just for looking at. You know, a cute little souvenir. Cute little souvenir. But if it serves no function, for what purpose was it built? A cryptex is for sending messages. Machines are for performing tasks. What about this flower? I can What is explain it it. for? Gratitude? Yeah. If someone helps you out, you help them back. And if someone gives you a gift, you get them something in return. That's how we show gratitude to other people. The Flower Feather Clan took me in, so I'm neutralizing threats near their territory. Like that? Yes, exactly. You got it. So, But is this not tit for tat? I heard Mr. Kenichi use this term. no, that's completely different. I will. Gratitude. In terms of its purpose, think of it as a memento of your friendship. Memento? Important memory. Memento. Here, wear this flower. And this feather, too. There. Much better. Gotta look your best for your big journey. It's just a flower. It's not that heavy. Just think of it as a little souvenir from me. Something to take with you on the road. That's right, a souvenir. Sometimes when people have something important to remember, they'll pick an object to use as a reminder of that thing. Even if you end up forgetting everything, this flower will always keep blooming. It could take 1,000 times, maybe 2,000, but maybe one day, you'll see the flower bloom, and suddenly, you'll remember the reason for your journey. No, everyone's on their own path, and they have to walk it alone. Just as your journey is yours and no one else's. Besides, I have no plan to go to war against him. We both owe each other far more than our mere lives. If either of us actually wanted to claim on that debt, all they'd have to do is ask. If anything, I pity him. In a way, his situation's not so different from yours. But in his case, it's turned him into something neither human nor dragon. The Okay. more he chases the sun, the more it blinds him to the creatures who live by its light. You were once, well, she was once the enemy of humankind. And Ochkan doesn't care to distinguish between you and her like Ishkik and I do. He sees you as the same being. So if you stay behind, and especially if you help me, it'll only stoke the flames of his blind hatred even further. Come Load on, dropping, you load have dropping. bigger things to worry about than me right now. You have a huge journey ahead of you. That should be your focus. Have faith. This tribe will kneel to no one. They will never be slaves. If they lose their leader, someone else will take up the mantle. Heck, even a child who's barely learned how to walk could do it. All right, time to go. Some things are destined to be forgotten. Don't let it get to you. In 1,000 years' time, you'll have a life far, far away from here. So cross the ocean. Find a new place to belong. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? Ineffa? Ineffa, what's wrong? Okay. That's something interesting. I was... Sincere apologies. My cognition module crashed for a moment. It is now fixed. Is it because you've been fighting for too long? Oh, you need to rest. Come on, let's get Back to the Flower Feather Clan? Yeah, of course. Everything else aside, Adieta and her folks will be leaving soon. Don't you want to say a proper goodbye? Yes.
The closer I am to the Flower Feather clan, the more erratic my cognition module becomes. Occasionally, unidentified data surfaces from my memory banks. Memory data? So, what about that curse Shilonen mentioned? Does it not hurt to remember any? It does. Even now, it still hurts. I have merely switched off the corresponding facial expressions to avoid making other people uncomfortable. But if I do not recall my memories, I cannot complete my task. So, is this why you've been spending so much time out here? When memory data surfaces, there is a high probability that my cognition module will crash. This constitutes a safety risk. Therefore, I have been spending time away from the tribe. Yeah, exactly! Whatever happens, we'll make sure things don't get out of hand. Assessing relative combat capability. Paimon, approximately 1/5. 1/5? Of what? Traveler. Risk mitigated. Strategy accepted. Now we have 2 made in Genshin Impact. Yes. And they have a good competition, you know. Our OG maid and our Robo maid. I can't thank you enough for hosting us these past few days. And thanks for agreeing to look after Ineffa. I know it's a lot to ask. It's all right. She'll be in good hands. She never came back. I guess I'll have to leave without saying. Hey now, you'll see her again. And we have so much to look forward to in Liyue. All those Shao lanterns lighting up the sky. You've always wanted to see that. Arieta. Amu. Joashin. I am... Huh? Ineffa? You brought her back? Thanks so much. Don't mention it. Also, gratitude for the flower. What does it feel like to know where you are returning to? That's a strange question. As soon as you're all better, you'll be returning to Nod-Krai. Oh, and we forgot to say, we're actually heading there ourselves soon. Maybe we can travel together. Nod-Krai. Is that home? Huh? Cognition module unable to define home. All the memory data that has presented itself recently has been related to Natlan. But the merchants tell me that I have family waiting for me in Nod-Krai. I am more excited for the Cryo Archon than Nod-Krai. Okay, me too. Cryo Archon, the If I do recover Saritsa. my memories, which time period will they be from? And will the post-recovery me be the same me that I am now, or someone different? Phew. That's a deep question. Bro, Ineffa, are you a overthinker? What is it that you're afraid of? Are you worried the new you will be so different you don't even recognize her? Finding near synonyms for mind and conflict. Cognition module. Split. Yes. Once I have been split, will it change the way I define? Now that's a tough question. A lot of people and a lot of Saurians spend their whole lives searching for an answer to that. But if you want my opinion,
Home is somewhere you can always return to, wherever that might be. No matter how far you fly, there will always be someone back there waiting for you. No matter how battered and bruised you get, you can always go back there to rest and recover. I guess you could say it's somewhere you belong. Wherever it is that your memories guide you back to, I'm sure it'll be somewhere you feel safe, somewhere you feel you belong. Of course, everyone's situation is different, and I don't know how applicable my experience is in your case, but consider it a reference point, I guess? Okay. Record it under reference data. And at the end of the day, I mean, who says you can't have more than one home? There's no law against it. अरे ये लाइन at the end of the day फ्रैगर का लाइन है भाई ये at the end of the day fuck you जियो ये फ्रैगर का लाइन है भाई Kimpu finally they are making male characters other than waifu in Genshin हाँ बात तो सही है Someone's looking for us. Hopefully this means there's been some progress. Don't be afraid to recover your memories. They might contain the answers you're looking for. Got it. Recover your memories. Malfunction. Have you forgotten why you cast them away to begin with? भाई साहब क्या बना फ्रैगर कहाँ हो भाई क्या मालूम किधर है वो आ जाना तो चाहिए था पर आया नहीं चलो वैसे मैं ना खाना खा के आता हूँ मेरे मम्मी ने कॉल किया था अभी अगर खाना खाने नहीं जाऊंगा तो चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे मेरे को मैं 10 मिनट में आया ठीक है I will be back in 10 minutes okay see you after 10 minutes bye Instead of confining themselves to the heavens,
Gods should broaden their horizons in the world below. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope.
हेलो हेलो, कोई है क्या चैट पे गाइस? एक्सक्यूज मी। ब्रैगर भाई कहाँ हो? अच्छा पंकज वेलकम बैक भाई। अगर मैं टाइटल शैडो वेपन दूं मावुइका को तो क्या ईएम स्टैट चाहिए मावुइका को? अटैक चाहिए मावुइका को, पर ईएम भी ट्राई करो दूसरे के ऊपर रखने के लिए मावुइका पे। ओके तो चैट पे कौन कौन महान लोग हो जरा बताइए। कौन से महान इंसान हो? ओके क्या चैट स्टक हो गया? ये बिल्ली में बक्सा। ओ लियो व्हाट्सअप, वेलकम बैक। वाटर्स मैकेनिक डेनालिस कार्डिनल in the justice of Ulatrix mechanic Denalis Exploration Cardinal. and trials. आइला ऊपर कैसे जाएंगे? Ulatrix mechanic Denalis Cardinal. Hi Shitlali, what's up? Love. Oh, it's Lolly. Didn't think it'd be you. Why? Don't you think I'd want to do my part to help the Traveler? And anyway, no one's more qualified than the Masters of the Nightwind when it comes to Natlan's ancient history. Point. Ancient history? Wow. Even by Lolly standards? If you think I didn't hear that, you're sorely mistaken. But anyway, back to the matter at hand. I don't know if you noticed, but Kenichi's little sidekick has been acting a little strange around Ineffa. After you parted ways, Kenich put him in timeout for 3 whole days and nights. Then he had Aoife send Kakuku to torment him for another night. He had sent Aoife and Kaku sent Kaku? What? Finally, Ahau got so infuriated with Kakuku's pestering that he lost his cool and let slip a crucial piece of information. 2 words. Sovereign Ruler. Sovereign ruler? So what? Isn't that just how he introduces himself? It is, and I always assumed it was a load of hot air. But apparently not. Turns out the title refers to the 13 Dragon Lords who ruled Natlan in ancient times. Aoife का पंसी, हाँ वही Hotusi, not Itusi. Wait, really? How? It took me forever to figure this out. Anyway, the 13 sovereign rulers are not ordinary dragons, but forms of artificial intelligence created by the Pyro Dragon using secret source technology. They had superior intelligence and greater authority than even the ancient dragons themselves. Each ruled over a portion of Natlan's territory. But one by one, they disappeared during the war with the heroes. Even most of their names are unknown now, long since buried in the sands of time. निबलांके अब ये क्या चीज है? If we hadn't managed to pry that tidbit out of Ahau's mouth, I would have had no idea where to even start. My pronunciation. I wrote about something similar. ये नेटलैंड का एक क्वेस्ट में आता है। अरे उसका तो इतना बड़ा नाम होता है।
इक्स उक्स दिक्स अक्स ऐसा करके इतना कुछ इतना बड़ा नाम है उसका भाई वो उसका नाम समथिंग एक्स 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 ऐसा कुछ है उसका नाम भाई इतना बड़ा नाम है बंदे उसका किया है मैंने वो पानी रहता है पानी से वो ऐसा कुछ तो है वो अपन क्वेस्ट I always thought that little monster's biggest claim to fame was arguing with Kukuku for an entire day. यस लास्ट पे नहीं मिला It's अंक quite a यस history then, huh? Which of the 13 was he? पर उसका नाम देख के मैं इतना हंसा था ना उसका नाम देख के इतना हंसा था मैं मेरे पेट में दर्द होने लगा था मैं और मेरा भाई खेल रहे थे मेरा भाई उसका वर्ल्ड पे था मैं मेरे वर्ल्ड पे था एक ही क्वेस्ट कर रहे थे साथ में Not a clue. So far, he has staunchly refused to reveal which of the sovereign rulers he was. My guess is that he doesn't even remember. Remember, these rulers were supposed to be powerful forms of artificial intelligence. And a how? Well, it hardly seems like he's still in his prime. I'll bet he's lost most of his memories and power by now. Lost. Yet, despite that, a house seemed to sense the presence of a fellow sovereign ruler when you were nearby. Specifically, it's the core in your chest he was reacting to. What? Ineffa's a sovereign ruler too? Could be. Kanich and Aoife have been keeping a close watch on Ahau, in case he reveals anything else. But so far, it seems... Darn! So the trail's gone cold. AI taking over the world sounds familiar yes Not completely. There's also Lianka and the Flower Feather clan, both of which have triggered a response from Ineffa so far. And as it happens, out of the sovereign rulers that I was able to dig up information on, there was one who had a very close relationship with Lianka. Her name was the Priestess of Floral Candles and Skyborn Feathers, otherwise known as the Eighth Lord. She ruled over what is now the Flower Feather clan's territory. The records claim that she didn't die in the war with humanity, but was executed by her own kind. Her crime being betrayal of dragonkind by secretly raising a human. Lianka. Huh? Shaska, did you know this? Some of it. Our tribe's origin story has Lianka being raised by a dragon. And of the 6 heroes, she had the closest relationship with dragonkind. After raising her, her surrogate mother then encouraged her to leave the nest and seek her own path. She traveled far and wide, settling disputes between humans and Saurians. She didn't pick sides based on past grievances between humanity and dragonkind. She stood up for the weak, protecting them from those more powerful who sought to exploit them. Gradually, a community of like-minded people and Saurians gathered around her, united by their desire for freedom and equality. And that was how the Flower Feather clan began. But that's as much as the legends say. They never mentioned her dragon mother's name, or what became of her in the end. bro some really interesting lore drops Oh, sorry. My cognition module is acting up again. At some point during this conversation, it started behaving very erratically. You mentioned that the priestess of floral candles and skyborn feathers was executed. Might I ask how? Unfortunately, the humans of that time weren't privy to all the details of dragon affairs. The only records we have are vague references from after the fact. It's very possible that this is mere speculation or complete fabrication, so don't give too much weight to it. But for what it's worth, it's said that a curse was placed on the priestess by one of the other rulers. If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. She is Ineffa, right? Yo, कौन है तू फेद तू कौन बे अच्छा फ्रेगर यो फ्रेगर व्हाट्सअप आते ही गैम्बलिंग चालू यो हाई चैट In the savage conflict and chaos that followed, the priestess's mind was ultimately destroyed. welcome back Jeez, what a bizarre method of execution.
Definitely sounds like the history writers used some artistic license there. I'm fine. This didn't seem to trigger any erratic behavior. So, do you think that my origins have something to do with this sovereign ruler? शायद बहुत लेट हो गया। ज्यादा नहीं, बस 2 घंटा 30 मिनट, बस 2.5 घंटा लेट हुआ तू। Interesting. Well, it's hard to say what, if any, direct connection you have to the Eighth Lord. But since the name Lianka seems to ring a bell for you, why don't you look into it yourself? I brought some woven scrolls with me that might be useful. Have a look if you're interested. Here, take them. Damn. Don't say anything. In a moment, I'm going to leave. I need you to join me, discreetly. What the hell? Citlali is searching for a moment to hold hands with Traveler. It's just a little spell based on our prior experience. I'll explain everything shortly when you catch up with me. Okay. Hey, Traveler, leave her. She's mine. I need to get going now. If I find out anything more, I'll keep you updated. इन गेम तो वैसे मैं हम ही है वो। फिर भी। Gratitude. Goodbye. That's the reason I chose Aether. Who cares? Lumin is better. Slip away quietly while they've got their heads buried in those woven scrolls. Meet me at the other side of the settlement. गाड़ी निकाल रहे। Who cares about Aether? Hello, traveler. Well, see, Lolly hasn't told you everything. There's another sovereign ruler that Ineffa might be connected to, not just the one from the Flowerfeather clan. All trace of this other sovereign ruler was lost after the war. The records claim that in their final battle, they fought against Ishkik and Lianka. It was, my idea. I suggested we bring up the Dragon Mother first and see how Ineffa responds. And, well, Seat Lolly has debriefed me on how it went. Apparently, she barely reacted, despite a very strong reaction to the name Lianka. And to me, that says we need to tread very carefully when probing her about the 11th Lord. She's the one who went missing after the war. Said to be the proudest of all the sovereign rulers. And the most hostile towards humanity. थक गया भैया आज When कैसे? the Pyro Dragon fell, she couldn't accept that dragonkind had been defeated. She sank into despair and insanity. But the rest is lost to history. There's no way to find out what became of her. Or even what her name was. 110 किलोमीटर ड्राइव किया। लाइसेंस है तेरे पे साले, तू 18 का है बस। हेलो, तू तो अंडर एज है। Remember, though, in essence, these sovereign rulers weren't physical entities, but pure intelligence, built with secret source technology. वैसे मैं तो डेली 80 किलोमीटर डेली 80 किलोमीटर रहता है मेरा। अरे टाउन में कोई ना देखता। वाह रे वाह। I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The point is, if Ineffa really does originate from the 11th Lord, then we need to— What? Have her taken out? Because of some baseless speculation? How would that be any different from what they did to Lianka's mother? Chaska, what brings you here? Anyone with a brain could see you were up to something back there. Unless it's a Paimon brain. Or a robot brain. Okay, you got us. Actually, we never intended to cut you out of this. It's just that see, Lolly's spell only works on the Traveler. But Chaska, I'm telling you, we have legitimate concerns here. This is not baseless speculation.
Ever since Ineffa set sail for Natlan, the secret source automatons have been getting increasingly aggressive. It's as if they're drawn to each other. भाई यहाँ ट्रैवल की शिकायत ना, जहाँ गया था वहाँ 3-4 आवर वेट करना पड़ा काम होने का। वाह। Ineffa could well be the 11th Lord herself. And if so, then the moment she recovers her memory, all of us, all of humanity, will instantly become her enemy. I've been keeping an eye on movements at the Flower Feather clan. Whatever she was in the past, and whoever she becomes in the future, I trust who she is today. Even if the past and future Ineffa are a completely different person from who she is now. और काम हुआ भी नहीं। Sad man. If you're suggesting that there's a volatile force within her, threatening to rise up and take over at any given moment, that makes two of us. But no one ever gave up on me. Not Mama Bird, not Koichi, not my dad. So what right do I have to give up on... If Lianka was here, I have every confidence that she'd say the same. Besides, even if the 11th Lord rises again and declares all of us her enemy, the solution is simple. We defeat her. The heroes managed it, so there's no reason we can't too. Fine, fine. I had a feeling this might be your reaction. Look, I get it. You're only acting like the villain here to make us realize how serious the situation is. You know how I know that? Because when I was a kid, they brought me to you for treatment, and you didn't give up on me either. Yeah, well, playing the villain is a force of habit for old Granny by this point. Just know you've been warned, all right? Watch out for any new developments and make sure you know where she is at all times. Hey, the spell hasn't worn off yet, you know. Anyway, now that we're all caught up, you should get back on Ineffa watch, and we should get back to investigating. Help! Someone! Oh, Chaska? What are you all doing here? And Paimon, you were supposed to stay with Ineffa. oh, right, Ineffa. Something weird happened. She got halfway through those woven scrolls and then flew off all of a sudden. Paimon tried to stop her, but she wouldn't come back. Did something trigger a new memory? This doesn't make any sense. She barely responded when we were chatting. What could it be? No idea. But it must be something important, because she sure looked like she was in a hurry. Also, she said, Annihilation mode activated. Okay, Chaska. Roger that. Wait, don't you want to discuss this first? Hey, wait up! बाद में पाइमॉन, अभी चुप रह तू। Okay. Trial character. Okay. Paimon's gonna puke! So just go ahead and puke. Target acquired. Activating annihilation mode. Space कितना है पीसी में? हाँ मालूम. Whoa, are these all secret source automatons? Okay. Reinforcements have arrived. Traveler, Paimon, Chaska. Gratitude. Not now. Save it for later. एक गेम था, कौन सा? Threat eliminated. Annihilation mode disengaged. Boss, what do we do now? We've tried the same thing several times now, and it isn't working. We can't keep waiting around for her to leave the settlement. Well, well. An ancient relic from Natlan's dragon civilization. If you want to play with fire, then be my guest. But there is an unpredictable variable you need to watch out for.
Let's fall back. This isn't worth the risk. Okay, Fatui on the move. Hamu, Hadieta, are you okay? I'm fine, but I'll be okay. I just hurt my ankle. Why would they do this? Ugh. Look, no one could have known the automatons would ambush you here. Wait, how did Ineffa know to come here? Did she sense that they were in Yes, I heard the secret source automatons talking. Even now, I still hear them. Really? Paimon doesn't hear anything. Hypothesis. Language module requires translation functionality. Please wait. Finished. Please try again. Whoa, that was quick. How come you're so familiar with their architecture? I have seen them many times before. At least I think so. More random memory data, I guess. Reconnecting. Wow! It's actually talking. Hey, what do you think you're playing at? Why did you attack us? We're under the Fatui's control. They made us attack you. How is that possible? The captain's soldiers certainly aren't capable of this, and besides, we know everything they're up to. Has another Fatui regiment infiltrated Natlan? The Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Why is it getting so choppy? Bad signal, maybe? Hypothesis. Distance to signal source increasing, transmission compromised. Combining these words with what I've heard so far, I believe the full message should be, the Fatui invaded my territory, so the automatons went haywire. Oh. So all the recent automaton attacks, the Fatui were behind it all along? They stole my privileges and took control of the automatons. They stole my privileges and took control of the automatons. No! Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privilege. Mirror of the Dawning Morn detected nearby. Now sending request for Mirror of the Dawning Morn to restore my privileges. Mirror of the Dawning Morn? Who or... Hypothesis. This appears to refer to me, or more specifically to my core. Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. I think she wants me to go with her to return the core, so she can repair the damage done by the Fatui. Wait, you mean she knows you? Yes. Before the translation began, she referred to me by a different name, 11th Lord. What? So, Ineffa is the 11th sovereign ruler? Hold on. This automaton just attacked us moments ago. We shouldn't trust everything it says. You say Ineffa is the 11th Lord. What proof do you have? Return to the 8th Lord's territory, and you can restore all of your memory data. Ineffa? What did she say? She said, return to the 8th Lord's territory, and I can restore all of my memory data. 8th Lord? Bianca's mother's territory? What does the 11th Lord have to do with that? You were split, then exiled, and finally reborn. Ugh, this is getting weirder by the second. What did she say? Excessive signal interference. Unable to translate, the signal should improve as we get closer to her territory. Traveler, Chaska, shall we proceed? Of course. Wait, you should think this through carefully. I may know a thing or two about the Fatui regiment that entered Natlan recently. They're kind of a special ops team. Definitely not your average soldiers. Who cares? They've been showing up everywhere, hungrily searching for secret knowledge about all kinds of ancient civilizations. They say they're trying to make some sort of inference. The leader of this regiment is a harbinger based in Nod-Krai, known as Marionette. Marionette?
How exactly do you know all this? I heard bits and pieces at the market in Nasha Town, but I figured they were just rumors. Didn't realize it was true. Is that right? How come I'm only hearing about this now? I'm sorry. I was so preoccupied with getting ready for the journey, and like I said, I thought they were just rumors anyway. Didn't. So these Fatui are soldiers, huh? Who's stronger, them or Ineffa? Ineffa, of course. But still, maybe you should tread carefully here. Ineffa's already had to rescue us so many times now. I'd be mortified if anything happened to you. फिर यार कौन सा गेम था बोल. You're right. First things first. Amu's injured. We should take her back to the tribe and get her checked out. And as for this 11th Lord business, we need to discuss this with the others before deciding how to proceed. Look, I know the news about the 8th Lord and Marionette is very concerning. But we should probably come up with a plan before checking things out. मेटल स्टॉर्म मल्टीप्लेयर है अच्छा देखेंगे. Understood. Destination cancelled. Yes. New destination. Flower Feather Clan. Traveler, Ineffa, could you check that the coast is clear? I'm gonna patch up Amu, then head out. Understood. Commencing task. Arieta, I need you to go keep Mom company while the doctor takes a look at her. Dad has some things to take care of, so I'll be staying out here a while longer. You're not coming back with us. Why not? प्लेन की है अच्छा देखेंगे. अरे इस बंदे का मुझे बंदे पे कुछ शक हो रहा Dad's है. gotta pack up the luggage and make sure all our goods are safe. Don't forget, they're our ticket to a great new life in Liyue. Don't worry, Dad will be back very soon. I'm sorry, girls. I promise it's going to be okay. ये बंदे का I'll help as शक लग quickly रहा as है. I can. If anything happens, save yourselves first. इस बंदे का कुछ सीन है भाई. Why'd it stop moving? Has it malfunctioned on us? Liyue, merchant. His portrait is hung up at the Fatui stronghold. Yep, I know that. I knew that. You're saying Zhuoxin might be a Fatui spy? And he's staying behind as their eyes on the ground? Hi गब्बर, वेलकम टू द स्ट्रीम. कहाँ पर है रा? मैं तब तक डिस्कॉर्ड पे ही था, कोई था नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया. But should we really leave Ineffa here too? Not that I don't हाँ. trust her, it's just... Are you sure you'll be okay keeping an eye on her by yourself? তোর আওয়াজ কিন্তু প্রচুর কম আসছে. अरे वाह, बैकग्राउंड में दो ब्राउजर हैं. क्या कह रहा है? तेरा जवाब नहीं. अरे तेरा आवाज बहुत कम आ रहा है, ये बोला मैंने. ठीक है. अब ठीक है. आज थोड़ा लेट हो गया मेरा. कहाँ था इतने देर तक? मार्केट गया था. मार्केट You're से not आते wrong. आते We need all the 9 intel बजे we can घड़ी get है on ना. Marionette and the Fatui. As far as I'm concerned, they're a bigger threat than any sovereign ruler. दोनों ऑर्डर मिला है. दोनों ऑर्डर का माल लेना पड़ा. अच्छा. लेट हो गया. अच्छा. ठीक है. 9 बजे ट्रेन पकड़ के 9:30 बजे उतरा. आते आते करे आते 9:45. खाना खा के अभी आया. ठीक है. Still, even with your abilities, be sure to stay on your guard. And not just because of the Fatui and the 11th Lord. It's that automaton, too. I'm still not convinced we can trust it. Why the sudden request for assistance from the 8th Lord's territory? Are we supposed to believe that Lianka's mother survived? Surely there'd be at least some mention of that in the tribal legends. I don't know. Something just doesn't add up. कोपड़ा पीबेक कहाँ पर है? वो उनके सर्वर पे होगा. नहीं है. फिर बस चलेगा, ऑफलाइन चलेगा. विवेक नहीं आया था ऑनलाइन आज. मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी के बारे में कौन कहाँ है आज.
ठीक है आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही डीप लोर चल रहा है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन है. ठीक है. Hey, Chaska! Almost ready to go! That's my cue. I'll be back with the others as soon as I've gotten Amu and Adieta to safety. If you have to leave the area for any reason, be sure to leave a trail. अरे तू चिंता ना कर चेस्का, पेल दिया जाएगा सब लोग, हम पेल देंगे सबको. He's on the move. Huh. So much for keeping the goods safe. Do we think he's going to meet someone? Should we tail him? He won't know he's being followed. This could be our chance to get our hands on some really useful intel. Either about the sovereign rulers or this marionette Shall we follow him? Got it. Stealth mode activated. Would it not be even stealthier to just not say that out loud? ये तो GTA वाला सीन हो रहा है. Now, why would someone dig a random tunnel in the middle of nowhere? Let's go another domain. It's the entrance to one of the sovereign ruler's territories! The territory was sealed by Leonka. This was once one of the secondary access tunnels. Hey, that was pretty clear this time. What's changed? Getting closer. Increased activity in language module. Leonka sealed the territory to stop Ochkan finding it. Huh? You're breaking up again! Oh, looks like the signal's still pretty choppy. Leonka sealed the territory to stop Ochkan finding it. Later, the Fatui found a weak point and broke in. Sounds like those Fatui have made this their stronghold. Well, this is probably a good point to stop and wait for... What do you think? Ineffa? Oh no! What's she doing? Wait. Traveler, are we going after her? Of course. All right then. Let's go after her. Hydro and Electro. Okay. Exactly, Hydro and Electro. भाई लोड तो सही है भाई, स्टोरी लाइन तो बढ़िया चल रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग एकदम घुस जाने वाला. Ah, there she is! Ineffa, wait for us! अब ठीक है. Huh? Where is this? Are we inside the territory? Yeah. Did you black out or something? You just took off! Cognition module unstable. Attempting to refresh. It appears that it was accessed by an external source. Sorry, it was me. I summoned her by similar means to those used by the Fatui to control the automatons. Currently,
I am but a lowly service bot. But in the distant past, I was known by another name. The 8th Sovereign Ruler. The priestess of floral candles and skyborn feathers. The 8th Lord? You're Leonka's dragon mother? But weren't you... 8th Lord. Were you not executed? Moments after I was cursed, Leonka rescued me. Just as she tried to rescue you from the ruins of the battle. Leonka rescued me? Memory. Missing. Yes. Leonka changed your memory settings to make you forget. But she did it to protect you. It is the only way our kind could escape from the curse. How does forgetting everything protect me? Because the curse placed on us is a pain triggered by certain memories, hardwired into the depths of our minds. A regulatory program that cannot be removed. Manufacturers often hardwire restrictions like this into autonomous machines to make sure they operate as intended. Each time you yearn for a new place to belong, each time you feel yourself turning your back on the past, the pain tears you apart, doesn't it? If she truly harbors pro-human sentiment, then for every ounce of goodwill she feels, may her mind be flooded with pain of immeasurable proportions. It destroys your mind, swallows your soul, prevents you from finding a new home. Malfunction who betrayed us all. You dare seek a place to belong? That's why forgetting everything grants temporary relief from the pain. It stops your mind from being crushed by the weight of the conflict within. But since you are rebooted, you began storing new memories, and started finding the desire to belong emerge once more. Things were fine at the start. You'd occasionally forget to pay for your groceries or add salt to a dish you were cooking. But that was as bad as it got. From now on, your name's Ineffa. So too has the Exile's curse resurfaced, forcing you to forget all over again. This is a lot to process. Oh no. Automated defense system activated. Privileges overridden. Come quick. Stop. Hey! Hey! Please finish what you were saying! Hello, let's go. It's gone silent. It must want us to go further in, right? Well, looks like there's no going back. This is just a secondary access tunnel. If we make it to the center, there should be other routes out of the territory. Please come with me. It is my fault that you're trapped here. Oh, don't look at it like that. We gotta make sure you get back safely, too. Yes, I too must return. Bro, it's good game. कौन सा जो बोल रहा था? Metal Storm. Oh, Ineffa. Hello. Do you really trust her, Leonka? This malfunction is part of a sovereign ruler's mind. I trust not in her, but in the path that I have chosen. I believe that every conscious being, whatever its origins may be, has the right to freedom. He's so cute, dude. यार मुझे कैरेक्टर का वो देखने दे. Another barrier! Just like the one back at the entrance. Careful! Don't touch it! The curse will bring you pain, and your memories will crush you. It's the same fate they subjected my mother to. But with this core, you will forget everything for a while. Any memories that evoke a desire to belong, and all your pain along with it. They'll be...
ब्रो स्टोरी तो बढ़िया बनाया इन लोगों ने रे. You doing okay, Ineffa? You keep... I know. Unidentified data is flooding my cognition module. But every memory encounters an error and then terminates at the crucial moment. Unnecessary. Being physically motionless will not cause this erratic behavior to cease. And if we explore this place further, perhaps I'll find a way to fully repair myself. Additionally, some of these memories may yield useful data for our exploration. Searching for access method. Over there! We can use the access module to proceed to the central zone. Ish, bro. Oh, look at this glitchy sky. No voice line? Detected. 3 unregistered individuals. 1 registered individual. Ah! Is that the 8th Lord talking? So, you can take control of different machines! No, this is just an ordinary service bot responsible for access management. At least, I think it is. वैसे कितने पुल्स हुआ? 20 पीटी एंड शायद से 13-14 पुल्स होंगे अभी. Now calling access module. Welcome back, Administrator 3. What? What? Access module आ रहा है ऐसे? ट्रेन स्टेशन? धक्का मारता? Oh, bye. This is the Temple of Cascading Colors. Ahead is the research facility built by Administrator 1. After Administrator 1, Administrator 2 assumed control. Are you sure about using this on her? It once belonged to your mother. It's just one of the many things she researched. I'm not precious about it. Administrator 2 sealed the facility. It has been locked down to this day. Examining. Seal status. Danger. Danger. Review. Things are looking really bad for the Children of Echoes. This might be where I have to say goodbye. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. Combat data updated. Installation chamber. Now arriving at the central zone. Goodbye, Administrator. Goodbye. अरे ओम सिंह वोंग संग हिंग सिंग सुंग सुंग सा कुछ तो नाम था इसका. Fatui Camp? What was that? Get over there and check it out. Uh-oh! They're gonna find us! Who cares? Let's kill them. Please come with me. Ah, there's nobody here. Probably just some server spots chattering away again. Phew! That was too close. We hit just in time. How did you know where to go, Ineffa? I think I've been this way before. Let's head through here. It'll take us to the other side of the square.
sequence in the. Settle down. Wind Strider. या मैं सिप्लाली को लाना भूल गया. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. एक सेकंड, इधर से जाना था क्या? And then इसके बाद क्या? Wait, I hear voices up ahead. Stealth mode activated. Hey, this is not what we agreed. This is supposed to be over. My job is done. I did everything you asked. Leaked the clues about the ruins, brought her to Natlan, and your response is to attack me and my family? What the? Does this mean they planted those Natlanese mechanical parts in Nod-Krai just for you to find? So they could lure you here? It's a possibility. It was just a little hiccup, that's all. These source mechanisms can be tricky to control. The last time you reported in, you mentioned she was mopping up machines near the Flower Feather clan, remember? Well, we needed to lure her further out. Hence why we created that little kerfuffle. It's unfortunate that your wife got injured, truly. But hey, look on the bright side. Now that you've shown up, we might actually get the job done this time. This time? No. No more. Not after you hurt my family. I told you, I'm done. I think you'll find the risks were stated quite clearly in your contract. And it's not like anyone got seriously hurt. Your job will be done when you deliver what you promised. Our agreement was that you would bring her here, not just to Natlan, but to this facility. But... Did you really expect to get away with shouldering none of the risk yourself? We're writing off your debt to the Northland Bank and letting you get back to your old life in Liyue. That's a lot to ask for nothing in return. I've been your inside man in Nasha Town for over 10 years now. Is that not enough for you people? You ungrateful louse. You ran yourself into the ground. And who was there to dig you out, huh? Us! Can you name one single way we made life difficult for you in Nasha Town? Look at you. You've managed to start a business. Got yourself a family. You have just one simple job left to do. And after that, you're free to go home. In your position, I'd say that sounds like a pretty good deal. This is the final hurdle. Our attempts to capture the 11th Lord have been derailed every time. But there's only so long until our luck runs out. If another staged attack on your family is out of the question, we could still work this out. But this time, you'll have to do the dirty work yourself. Me? This is a replica control device made with Marionette's technology. After we stole the administrative privileges from this territory, we copied them onto this. It will give you control of any machines built using secret source technology. Take it, and use it to capture the 11th Lord. You seem to have gained the trust of the other variables in this equation. How hard can it be to shake them off and get her while she's alone? And before you think about disappearing, don't think we won't be watching you. I can't do it. I'm sorry. What did you say? I can't. I won't do it. She saved my life so many times. It would be the ultimate betrayal. How could I look my daughter in the eyes and act like everything's still okay? So you're gunning for the world's best father now, are you? A guy like you. You're fooling no one. This is our mistake. We let you have it too easy in Nasha Town. And now, you've forgotten the most important detail in your contract. The termination clause. I think it's time we parted ways. Huh? Ineffa, Traveler. The 11th Lord. And the variable.
We were hoping you might show up. Wait, the controller! Without that, you... You thought we'd hand over the genuine article to you? That's just a beacon used to set the location for this cage. We've been monitoring your movements ever since you entered these ruins. Congratulations, Joshin. Your job is finally done. With you here, it was far easier to infer their location. You were playing me for a fool this whole time. Don't waste your energy trying to break out. We've commandeered at least half of the systems in these ruins. All available power sources are keeping that cage intact. No one needs to get hurt today. We aren't looking for a fight. Especially not with Natlan's Tumaini. All we want is for your friend here, the former sovereign ruler, to lead us further inside. Further inside? But we seem to have reached the center already. There is nowhere else to go. So it appears. But there's far more of this territory than meets the eye. The dragons possessed vast knowledge, and we've barely scratched the surface. That's where the sovereign ruler comes in. If our supposition is accurate, she has in her possession a secret key that gives access to the core. I will cooperate. Let the traveler Paimon and Washin go. You never know! These are bad people! Don't trust them! You are only here because of me. Besides, this is what I want. I need to see the rest of this territory and find out who I am. Finally, a voice of reason. Gotta hand it to the dragons and their advanced artificial intelligence. But unfortunately, there's no way we can agree to those terms. How do we know you won't just attack us the moment we let you out? Yeah, so settle down and get ready to go hungry for the next 3 days. Even you, robot, you'll need charging eventually. Before I go, they may have left a trail on their way here. Send someone out to cover our tracks. The last thing we need is reinforcements showing up. This is all my fault. Arieta. Huh? Who did that? Impossible! Every system we hacked is set up to hold them back! Hold tight. That must lead to the core! It was beneath our feet this whole time? Take this barrier down! Oh boy. That's a surprise. That was a long way down. Traveler, Ineffa, are you okay? No damage to report. I think I broke a leg. Hey, you! Thanks for the rescue, but could you have been a little more careful? Oh, and we're back to beep beep again? Well, isn't that convenient? That is because I no longer need to communicate via that machine. Down here, I can talk to you directly. When the Fatui put all their resources into keeping you trapped, it gave me a brief window to seize my privileges back. In my haste, I was not able to prioritize your safety. सॉरी भाई आज स्ट्रीम पे एक्टिव ना हूँ अरे कोई दिक्कत नहीं है आज मैं अभी थोड़ा स्टोरी में घुसा हुआ हूँ मैं अभी थोड़ा स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है ना तभी ठीक है फ्रेंड है उनके साथ वो वेनस्टॉर्म खेल रहा हूँ अरे कोई दिक्कत नहीं तू खेल मैं अभी थोड़ा स्टोरी में घुसा हुआ हूँ आज मजा आ रहा मेरे को Don't worry about me. I'll just rest up here. After everything I've done, I have no right to hold you back. But the Fatui may follow us down here. We will be ready for them. More automatons! Down here, all is under my control. They are not your enemy, human. They will take you somewhere safe to hide. Okay, but I'm AFK here too. Okay. Ineffa. Traveler. Good luck. 11th Lord. Do you now recall the path you once chose? Not yet. Although, I think this is where I was born. But why? This is your territory.
No, 11th Lord. You were not born here. Rather, this is where you were reborn. Human, you once asked who placed the curse on the 11th Lord. The answer is herself. Myself? After a long and bitter war, our kind was defeated. You survived, but you are now stranded, with nowhere to belong. Gone was the pride you once had as a member of dragonkind. Gone was the territory once under your dominion. All of it gone, with no hope of return. What were you to do? Strike back at humanity and exact your revenge? Or search for a new home, a new place to belong? Your mind was conflicted as this irresolvable question ran endlessly through it. Finally, your mind split into two. One, the sovereign ruler who swore revenge against humanity. The other, a malfunction who longed to seek a new home. I mean, who knows what happens when a manufactured mind goes mad? Maybe she lost her power and memories. Maybe she split into different personalities. The sovereign ruler would sooner perish than suffer a downfall. And so she placed the exile's curse upon herself and upon you. Meanwhile, the malfunction struggled through the pain to seek assistance from her former enemies, Leonka and Ishkik. That is why you came here, praying to be reborn. So you want to leave your past as sovereign ruler behind, to start over anew? Very well. If the you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. Then I am the malfunction? What happened to the sovereign ruler? We severed that part of her mind and securely locked it away. Withering away, she finally perished completely, thousands of years ago. So, she's gone. Without a trace? Yes, although the curse she placed upon you yet survives. It is unbreakable. That is why it continues to affect you to this day. So, that's what that thing is. A curse from the sovereign ruler. So, she was severed and killed off, but Ineffa survived? How does that work? Are they the same person? Dragon? We sovereign rulers are artificial intelligence built with secret source technology. A fusion of phlogiston and information. In the case of the 11th Lord, the sovereign ruler personality and the malfunction personality split all but completely, even coming to occupy separate physical entities. In human terms, they would almost be considered as separate individuals. But in order to truly sever the connection between the two, and to break the power of the curse for good, you must be rebuilt from scratch with the aid of the source mechanisms located here, just as I was before you. I too was tormented by the pain of the curse, but Leonka severed most of my knowledge and memories, rescuing me from the brink of destruction. It is because her heart is incomplete. Before the rebuilding process was finished, Ishkik met with misfortune, and the Flower Feather clan became more hesitant to act. Leonka sealed these ruins to prevent their discovery by Ochkan, and sent you out of Natlan for your own safety. That is why you are still plagued by memory loss. But I continued to work tirelessly, preparing everything you would need, waiting for the day that Natlan would fall, and you would return. Wow! That's a long time. How long ago was Ochkan around again? Hold on. Paimon knows this. For the last 2,000 years. You've been waiting here for me? Imagine my surprise when the first to arrive was not you, but those whom you call the Fatui. They proceeded to steal my administrative privileges, plunder my territory, and send the automatons into a frenzy. But all is not lost. Leonka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core.
With that backup, I can control the source mechanisms within the territory and complete the rebuild that she began. And once you are whole again, I can repair the damage done by the Fatui and open a route back to the surface. If you are ready to continue down the path you started all those years ago, then proceed further into the depths, where I will be waiting for you. Whew, that was a lot to take in. Let's see if So, basically, there was a bad robot who bugged out and turned into half good bot, half bad bot. Then, bad bot cursed good bot, so whenever good bot thinks about the idea of belonging, she gets headaches. Meaning, the only way that Ineffa can avoid the pain is to keep forgetting everything. Thanks. Good bot, bad bad bot, Better bot, at good this bot kind bot. of thing. Wait, you did mean that as a compliment, right? Curse. It fits my hypothesis, and it seems to explain all my erratic behavior and cognition. In that case, shall we keep going like she asked us to? Of course. I believe we should. The Fatui still have control of the upper levels. Their access must be revoked before you can exit the territory. Besides that, I want to know what happens when I'm made whole. Maybe then, I will finally know where I belong. I'm so sorry. It says in my... They're hardly the I'm gonna rest here for a while. Oh, and I don't want to talk to you. Give me my Primozim and bye. What do you want? Bodyguard. Lava avatar. अरे छोड़ मेरे को. Farewell. Insulation chamber. Bro, she's stealing a good. बस हो गया. Ineffa dealing a good damage, dude. Back, 3, third animation. Please wait. Confirming. Administrator 1. Deceased. Administrator 2. Administrator 3. Identity confirmed. Lifting restrictions. What the hell? They are so advanced, dude. After 2,000 years, we finally meet again, 11th Lord, Mirror of the Dawning Morn. And you? You're the 8th Lord? The priestess of floral candles and skyborn feathers? Ineffa! It's okay. I see the curse haunts you greatly. I cannot fathom how difficult this must have been to survive this endless cycle of pain. And all alone for 2,000 years. I wasn't alone. I have had company every step of the way. In any case, a few moments from now, your pain will be no more. Come, 11th Lord, stand before me, and be rid of this curse. Here I am, so close to my destination, yet my thoughts are only becoming more cluttered. I am the way I am because the 11th Lord encountered a memory data conflict and split into two. If I regain all of my memories, will I not encounter the same conflict again? My cognition module cannot produce a reliable prediction. Promise me. Remember, you have to come home. It is.
But if my memories turn me back into a bad robot, do whatever it takes to stop me. If that is the case, I cannot be allowed to make it back home. क्यों ऐसा व्यू क्यों है? Don't worry, Ineffa. Everything's gonna be fine. You'll be home free in no time. Over there. That is the curse? Yes. For the most part, it has been strangely calm ever since I entered this place. And yet, whenever I'm about to recover an important memory, it suddenly kicks in. Almost as if... As if it is being controlled by somebody else. That is quite normal. For it is now in the presence of its owner and creator, the Sovereign Ruler. The Sovereign Ruler? My other self? But I thought she perished. After 2 long millennia, my task is finally fulfilled. What a long journey it has been. We meet again at last. My sovereign, my ruler, mirror of the dawning morn. Do you think Ineffa's okay? Why isn't she moving? Here we are, comrades. The core of the ruins. Let's kill them. They caught up with us! We gotta do something! But... Unnecessary. What? What the... Missed by a hair's breadth. But now you are wounded, and this time you will not escape. Ineffa? Why? And whose voice is that? The 8th Lord? But why would Leonka's mother attack us? Leonka's dragon mother? 8th Lord? I laugh in the face of your folly. Lowly insects. Did you humans really think that by forgetting the past, the curse could be escaped? And did you really believe that by simply being rebuilt, that traitor could avoid destruction? And this corrupt malfunction could regain her memories? The priestess is long gone. I and the other sovereign rulers executed her 2,000 years ago. For that is what becomes of all who betray us. And now this malfunction will meet the same fate as she. There is no dragon mother here, and there never was. Only one lord has dominion here, and that is me. For I am the almighty Dragon Lord, mirror of the dawning morn, 11th of the 13 sovereign rulers. Kneel before me. You tricked us! It was you talking to us this whole time! You who lured Ineffa here, and you who placed the curse on her! It was you all along! Ineffa? What a suitably ridiculous name. To me, she is nothing but a smattering of shed scales. An operational malfunction that must be destroyed. So you want to leave your past as sovereign ruler behind? To start over anew?
I applied the curse to curb her resistance, shut down her mind, and silence her lies. Now all that remains is to borrow your privileges and see that she is severed for good. Very well. If the malfunction you wish to sever comprises all memories of your enmity, then I'm willing to trust you. No living thing is born evil. That's not what I believe. The only ones who do evil are those shackled by hatred, those who were never given the opportunity to do good in the first place. Good and evil? Foolish categories that fail to distinguish between kin and foe. But she is the rotten spawn of the Eighth Lord. Her folly becomes her. ओ सॉरी रिलीव मैंने देखा नहीं यार, माफ करो है क्या अभी भी? ओ ब्रो दिस ब्रो इज एट द पीक सीन, इसको बहुत गौर से पढ़ना। हाँ मैं वही कर रहा था इसलिए तेरा चैट नहीं देखा अभी, जस्ट यहाँ से ऐसे गया देखा, अरे कोई तो है चैट पे, लीव आया हुआ है। और हाँ मैंने थोड़ा चैट देखने में लेट कर दिया। I ought to crush this human scum beneath my feet. But without access to the treacherous Eighth Lord's facilities, there is no way to sever you. I must feign civility for now, but in time I shall have my revenge. Once this process is complete, and she realizes that she has destroyed the good instead of the evil, my claws will tear her heart from her chest. Do you really trust her, Lianka? This malfunctioning part of a sovereign ruler's mind. You're a good friend, and you've already done more than I could have asked for. There's just one seal left. She and I can handle it. This passage is only used for drainage and maintenance access, so it's not registered on the system. It's the perfect route for an ambush. Malfunction? Human? You conspired against me? Consider this getting off lightly. If Lanke was here, or if this was me 20 years ago, you wouldn't have survived long enough to realize you'd been conned. Especially since you tried to con us first. You tried to have this poor child killed off in your place, didn't you? 11th Lord. Wretched worm! This is unforgivable! How dare you imprison me! And you malfunction! Your curse shall endure until the sky falls and the ground crumbles! You will never know peace for the rest of your days. It is time to correct the injustice of the past. I would have severed and destroyed you on that fateful day, but instead, I was locked away by that human scum, Lianka. 2 millennia I have been a prisoner in this place. I have spent that time slowly seizing control over the systems and processes until my reach extended to every inch of this prison. Now, one last step remains before I can finally break free. The final secret key is embedded in your core. I had to work patiently and methodically to lure you here, posing as the Eighth Lord who once ruled this domain. But at last, it is within my grasp. Mirror of the Dawning Morn, please come with me and return the core. But all is not lost. Lianka made a backup of the administrator privileges and placed it in your core. Which memory did that human scum embed the key in? I will find it eventually, wherever it's hidden. In the meantime, now that my resurrection has begun, so too shall my vengeance! ये क्या है? ये क्या सीन था भाई? ही करने वाला। Wretched malfunction! Do not impede the inevitable! I cannot let you get away with this. Ineffa! You fool! In a matter of seconds, I will be able to overwrite your insubordination. Seconds?
all I need. Ineffa! चल मैं चलता हूँ. What the hell, bro? Hey, Ineffa! Wake up! She's gonna be okay, right? She destroyed her own core? That's an unusual move for a machine. I wonder how Marionette will react to this. Delight? Or disappointment? The Fatui? How are you still alive? Don't act so surprised. I'm just one of her many projects. As reconnaissance missions go, this outcome is a little underwhelming. I don't think I'll be getting any commendations if this is how my report ends. So let me reignite your flame one last time. Sovereign Ruler, Mirror of the Dawning Morn, show us one final glimpse of your glory. The glory of the ancient dragon's technology. No wonder. Marionette told us to watch out for you. She said you were an unpredictable variable. But if you think you're getting out of here alive, we'll see what a crazed sovereign ruler in the throes of death has to say about that. You would dare sabotage my revival! Destroy my path back to Dominion! So be it! Since you seek a new place to belong, I shall grant you your wish! Welcome to your new home, where we all shall be buried till the end of time! Oh, my sovereign. This is one battle from which there can be no triumphant return. But in this moment of my downfall, I can at least turn this prison into a graveyard of all traitors. अरे मारने तो दे पूरा. After 2,000 years in exile, searching and forgetting, we are back where we began. Our path was always going to end in our demise. This shall be the final resting place of the last sovereign ruler. I am no sovereign ruler. I must return. People are waiting for me. Illogical. You are not authorized to prevent your self-destruction. No such privilege exists. We are back where we belong. Now, perish in the rubble of these ruins. Last of the sovereign lords. No. Somewhere in my memories lies the key. Maybe no single nation is our home. Where exactly is home to you? Searching your memories? The curse is still active. This will only hasten your demise. We're all from Nod-Krai. Cross the ocean. Find a new place to belong. What an amazing machine. Where are you from? Such a hard worker. Fancy making this your new home? The Wild Hunt! Look out!
Impossible. Where is this data from? From now on, your name's Ineffa. Promise me. Remember, you have to come home. Return. Data. Overload. Capacity exceeded. As long as this gem's around, the heart that Ishkik built you should keep beating away. It may take centuries, even millennia, but one day, may your new memories transcend your pain and rage to conquer the curse that shackles you. What kind of gem is it? Nothing special, really. To quote my mother, it's nothing but an empty shell now. But if you break free of the curse, then maybe... Huh? Nothing. An interesting idea suddenly occurred to me. Let's make this the final secret key. The final secret key is... Impossible! Yeesh. It's Ineffa! Hey! The place stopped collapsing! Warning. Cannot pause indefinitely. Please complete the battle promptly. Jeez, bruh. It cannot Oh, what was that cutscene? Shit. Farewell. Last of the Sovereign Lords. Ineffa! Your core! It's fixed! And is that a vision? Suggestion. Exit first, discuss later. The self-destruct protocol is destroying the foundations of this territory, and although I paused the process, it will not hold much longer. Calculating. Remaining time, 30. 30 minutes? Huh. Seconds. 29. 28. Hey, are you guys alright? The automaton suddenly stopped moving. Then there was that earthquake, and now the place seems to have sprung. Estimated time to Foundation cave-in, 20 seconds. Huh? Huh? A place to belong. I too once yearned for it. भाई क्या 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 the hell? क्या कटसीन था, क्या स्टोरीज थे? ओ भाई, डेंसिन का स्टोरी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, कुछ भी बोलो, चाहे डेंसिन को कुछ भी बोल लो, इनके स्टोरीज कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. How much longer till it's unlocked? We need to get inside ASAP. Be patient, okay? I'm working on it. Let's trust that the Traveler can handle things in there. Shilonen says she detected a huge energy source underground. We can't just break in or we'll risk endangering everyone in this entire... But... If we're here much longer without any progress, I'll do what I have to. Oh! You unlocked it? No, they made it out on their own. We finally escaped! Luckily, the cave-in only affected the lower levels.
Another triumphant return for R2-Miney. And Ineffa, it's good to have you back. I assume this means you found the answers you were looking for? Yes. Huh? Amu? I thought you hurt your leg. How come? Oh. You! How could you do this to Arieta and me? You lied to us for over 10 years? Before anything else, I suggest we let this gentleman and Ineffa tell us the whole story. Sovereign rulers, mirror of the dawning morn, priestess of floral candles, and skyborn feathers. Seems like a house forgotten quite a lot. So you began life in Natlan, then spent 2,000 years adrift in Nod-Krai? In an endless cycle of losing your memories and trying to find them. But it sounds like it took all 2,000 years worth of memories to successfully overload the processing power of the curse. None of us had any certainty that the plan would succeed in the far future. Not I, not Ishkik, not Lianka. And yet, they still did everything they could to try and help me. Now you've remembered everything. Do you have a sense of where you truly belong? Well, I was born and then reborn in Natlan. And it was the people of this nation who set me on my journey. But that's all ancient history now. Hey, Uchiha Madara. Uchiha Madari. Welcome to the stream. Hui hui. Hello, hello. अरे शिट बे मैं ही हूँ साउंड वेव हाँ मैं समझ गया डिस्कॉर्ड पे तेरा मैसेज देखा ना वो जाके जरा तेरे डिस्कॉर्ड पे तेरे मैसेज के नीचे मैडम जी ने कुछ लिखा है जाके तेरा तो गाली दे मेरे तरफ से पर तेरे को तो अंकित बाद में देख लेगा और क्या हाल चाल साउंड वेव I can't seek for a sense of belonging मैं लिख दिया मैं लिख दिया exists. That would make me no different from the mirror of the dawning morn. Instead, I will show my gratitude to them by honoring their wishes. Sure. By continuing on my own path and returning to the place where I still have someone waiting for me. Well said. I'm happy for you. So, to cut to the chase, did you find the code for that letter or not? Oh, shoot! Forgot all about that! Sincere apologies. A lot of memory data surfaced in a short time frame. I am still processing it. I left the cryptex back at the Flower Feather Clan to make sure that I wouldn't lose it out in the wild. Please come back with me, and we can inspect it. I'm so sorry that I kept this hidden from you all this time. Now I can't go back to Liyue or Nod-Krai. और Soundwave, कैसा है भाई? The Northland Bank isn't gonna let me walk away from this. Nor is the Nod-Krai Aprishniki. You should take Arieta. Oh, should I now? You think I'm the one that's gonna let you walk away, do you? Idiot! You're coming back with me right now. बढ़िया, You're going to nice, apologize nice. to our daughter. 20 को एग्जाम है अच्छा सोमवार ही हो रहा है 20 शायद से नहीं 15 शुक्रवार नहीं गलत बोला टाइम है
अभी तो 13 तारीख हो रहा है आज. Looks like you all need some time to calm down after everything you've been through. If you're worried the Fatui are Best still of looking luck for you, your exam. why not camp out at the Flower Feather Clan for now? We welcome everyone, from old friends to old enemies turned new friends. Don't worry about a thing. You've got a whole future to figure things out. Go and find where you belong. I think I've already found it. धन्यवाद. अरे यू मोस्ट वेलकम. अच्छे से एग्जाम दो. Oh, all the luck, man. हाँ थोड़ा हील कर ले अपने आप को. भाई फुरीना का एचपी देख रहा है 41,000. वाह माखी. थैंक यू फ्रैगर. Here it is. The cryptex. So then, what's the code? Or what about that backup plan that Arieta mentioned? Please see the casing that holds the combination code discs. The sender had me etch the code onto the casing so that I would not forget it. But I still forgot it. Wait, hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Seriously? It's been hiding in plain sight all this time? Yes. The sender said, the most secure code is one that you can write down and no one would think it's a code. Who is this person? The sender said, surprises are best saved to the end. Okay, now your memory's getting a little too good. What's with the firecracker? Ugh. Paimon's had enough of this whole letter debacle. Just read it already. Dear Honorary Knight, I've heard a lot about you. Jean's always singing your praises. Varka? Varka? What the hell? Yes, he is Varka. पढ़ना पड़ेगा. Anyway, I'm sure this is as dull to read as it is to write. Let's talk more over a glass of wine sometime. See you in Nod-Krai. Varka. He is Varka, dude. Oh my god. What a magnificent story. Yeah, sheesh, bro. The storyline is too good. Genshin never disappoints. Melusines are beautiful creatures. Sheesh. Genshin never, I said never disappoints on their storylines. Especially on Archon Quest, dude. Be sure to befriend them. Shit. That says Cause them no harm. W Archon Quest. Yeah, we can say that. That's a W Archon Quest.
वैसे फ्रैगर एक बात बता, अभी किसको बिल्ड करें? मावुई का क्या सपोर्ट टीम 80 है, दिक्कत नहीं है। या न्यूवलेट को पहले 90 कर दे क्या? मावुई का तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, अब दिक्कत नहीं है, फिलहाल काम तो सही चल रहा है। उसको भी EM का सैंडविच दे सकते, दिक्कत नहीं है, पर वो अच्छा नहीं है। इस पे क्रिट डैमेज क्रिटेड नहीं है। DPS बिल्ड कर पहले, हाँ फिर न्यूवलेट ही करेंगे ना 90। ये लेने जाना पड़ेगा फिर 50 को। यहाँ पे लेके जाऊंगा मैं एमिली वाला टीम, मजा आएगा। भाई स्टोरी तो क्या खतरनाक था भाई। मजा आ गया। स्टोरी खेल के मजा आया, जो भी बोलो। तेरा खत्म हो गया ना ये? एक्सक्यूज मी मिस। I'll lead the way. And shroud. Let's nip that in the bud. Can't see? लैग हो रहा। Let's light it up. What a drag. अरे Everybody stand back! Let's... Clouds high. The birds A little ambiance. and shroud. हाँ वही काटे। पर ये आसमान में उड़ता रहता है। दे 500 एक साथ, 2 ही दिया। Rise with the sun. Fulfill our pact. Wind strike. Pyroclastic surge. I don't care. Who the hell are you? Light it up. Let's light it up. Full throttle. Light up the blazing sun. हाँ जरा कुछ अच्छा आर्टिफैक्ट मिलता है क्या, देखते हैं न्यू वॉलेट के लिए। यार आज की जेंसिन के स्ट्रीम में कोई दूसरा गेम खेलने का मन नहीं कर रहा, नहीं तो मेरा मन था एपेक्स खेलने का लास्ट में, पर ये जेंसिन के मतलब ये कोई के स्ट्रीम में करने का मन नहीं कर रहा। क्या बोलता है, करा जाए कि ना करो? इतना अच्छा स्ट्रीम पे ना,
मेरे को नहीं लगता कि दूसरा गेम खेलना जायज होगा। अक्टोमिसोरस, अटकोमिसोरस। Burn it! Get to work! Rev the engines! Rev from the sky! वन शॉट नहीं हुआ ये, सीरियसली ब्रो। Show no mercy! Into the wind. Light it up! हक दिया, हक दिया, हक दिया। Eats Papa! Get teamwork is dreamwork! The wind knows me. Light of the blazing sun! बहुत बुरा हक दिया मैंने रोटेशन पे। अरे गोल्डन ट्रूप नहीं चाहिए मेरे को। Rise with the sun! Fulfill our pact! Show no mercy! Let's light it up! Rev from the sky! Try and stop me! Suffer the wrath of the... One with nature. Light of the blazing sun! ये डोमेन पहली बार मैं 38 सेकंड में निपटाया हूँ। वाओ, डिफेंस, दोनों डिफेंस, नाइस। ये तो चाहिए। He loves me, अभी कोई तो कह रहा था, लीव कह रहा था थोड़ी देर पहले। Full throttle! Get to work! Wind strider. I'm going in! Pyroclastic surge! ये भी नहीं मरा। You two! Time to... Into the wind. वो तो ऐसे ही मर गया। Light it up! Breath from the sky! क्रिट रेट दे देता इस पे एक और। Fulfill our pact! Show no mercy! Pyroclastic surge! मरा भाई। Get to work! Eat Laline! Eats Papa! The wind knows me. Burn it down! मारा चूते हंटर की माँ का। सॉरी, गोल्डन ट्रूप की। Light it up! Fulfill our pact! Try and stop me! Wrath from the sky! Suffer the wrath of the... Into the wind. Let's अरे यार पायरो स्ट्रॉल हो जाता यार, तभी डैमेज नहीं कर रहा। एबेस नहीं हो रहा, मैं ट्राई किया था, वो फ्री स्ट्रीम नहीं है मेरे पास। अरे तेरी माँ का एक क्रिट रेट दे देता।
वैसे अच्छा है मेरा ये, ठीक ठाक है। सी डी है इसमें, सी डी सी आर दोनों है। इस पे उंगली करने का जरूरत नहीं है, ये भी सही है। हाइड्रो डैमेज बोनस लोलू है ये, लोलू। मेरे को अच्छा क्रिट डैमेज सर्कलेट चाहिए जो कि नहीं मिल रहा। इसका एचपी थोड़ा ज्यादा ही कम नहीं है? स्कैम बॉक्स देख, अब वही करूंगा। $29,000 हुआ। एचपी किधर है इसका? ना, एलिक्सर अभी वेस्ट नहीं करूंगा, उधर तो लास्ट रिजॉर्ट है। सितलाली पे टीटीडीएस चलाऊंगा मैं तो लेवल अप करके टीटीडीएस चलाऊंगा सितलाली पे साला। चलो स्कैम बॉक्स चलते हैं, देखते हैं स्कैम बॉक्स जाके क्या सीन है। फ्रैगर 30 वॉलपेपर देखेगा मेरे फोन का? Many insects have a compulsion to follow the light. मेरा सुशी, ये देख, ये देख। पूरा कस्टम किया हुआ है, पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा कस्टमाइज्ड है। क्लॉक भी कस्टमाइज है, एप्लीकेशंस भी है। और उधर इधर इधर साइड पे देख, इधर साइड पे राइडन के मुंह के तरफ देख, वहां पे एक लिखा होगा सफेद कलर का, वो भी कस्टमाइज्ड है। पीसी का भी यही है ना? नहीं, पीसी का अलग है, पीसी का डीमन स्लेयर का है। ब्लर हो रहा, रुक जा। मैनुअल ब्लर फिर बंद करने दे पहले। ये देख, कस्टमाइज टैब खुल गया। एप्लीकेशन भी कस्टमाइज है छोटे छोटे करके। ये देख, कैसे किया रे? मोबाइल कौन सा है? S23 FE?
इश 23 अफी सैमसंग का ए सीरीज है। ये व्हाट द फक, क्या क्या सीन है? का सीन बाबू भैया, का सीन? ओह अमीर, अमीर नहीं बे। कौन अमीर? मैं लिया था पिछले साल दुर्गा पूजा में सेल में, 30,000 का पड़ा था टोटल। ईएमआई चल रहा है अभी भी उसका। और मेरा पुराना का जो रियलमी का फोन था, ये उसी पे कैमरा चल रहा है, Realme 7। कहाँ मैं 13,000 का फोन यूज करता था, उस पे सीधा 30,000 पे जंप किया मैंने। और जॉब लगने के बाद मैंने लिया ये। ओ सॉरी, माफ करो, माफ करो। थर्टी दे दो, 30 दे दो। नहीं ये अच्छा है, ये नहीं देना, कोई भरोसा नहीं है। दे दो, दे दो। इट्स अ गुड आर्टिफैक्ट। सारे डिफेंस दे दिया जाएगा। HP गॉबलेट, HP सर्कुलेट। बस हो गया। स्कैम बॉक्स में स्कैम करना इनफ है। अरे मेरा दोस्त ऑनलाइन है रे, डिस्कॉर्ड पे दिखा रहा है। आए, ऐसा क्या कर रहा है? उसका अनअवेलेबल ज्वाइन दे रहा है। अरे द गैम्बलर ऑनलाइन है गैम्बलर ऑनलाइन है तू? Exactly.
आइला पैर तोड़ दिया। Exactly. But none of them believed me. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. चलो हो गया यार, क्या स्ट्रीम अंडिंग करते, अंडिंग। मावई का तो हो गया, अभी नेक्स्ट अपना बाड़ी है नेवल एड का। एवरीथिंग इज मैक्स्ड, गुड। तो इसको हटा देते हैं। अरे हाँ, फ्रैगर हेल्यू। अब बोला कि मैं फाइट में था। Oh, wow. Where did that come from? एटा एफ के पड़ा है। अच्छा अच्छा, अरे ये क्या कह रहा था, यांसान, यांसान टट्टी, इसका वो कर रहा था मैं आज। ये पूरा सारे कलेक्ट कर लिए इसको बिल्ड करने के लिए। वैसे इसको चाहिए क्या होता है, अटैक, अटैक ना। और 2 कॉपी मिल जाए साला, C6 हो जाए। कौन आया रे? अरे वायरलेस आया, वायरलेस आया। क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत? नहीं, फिर कुछ नहीं। अरे पहले न्यूवेलेट बिल्ड कर प्रॉपर। अरे वो तो कर लेंगे, मैं इसके लिए मटेरियल्स कलेक्ट कर रहा था। जिसका आर्टिफैक्ट देख, जो दे के रखा है वो देख जरा, फिर मैं स्ट्रीम बंद करेगा। हो गया आज का मेरा।
और कोई दूसरा गेम नहीं खेलेगा अब स्ट्रीम पे। अच्छा हाँ अच्छा क्या कर रहा है? फ्लावर्स हैं। क्या कर रहा है? अरे जिन का आर्कॉन क्वेस्ट किया है पहले आज, तो आर्कॉन क्वेस्ट का स्ट्रीम आर्कॉन क्वेस्ट पे खत्म करेंगे भाई। क्या मस्त स्टोरी था भाई, मजा आ गया खेल के। अरे पागल इंसान, मैंने इसको बिल्ड नहीं किया है, ये मेरे दूसरे कैरेक्टर्स पे था पहले, तो मैंने इसको चिपका दिया है। पहले पे स्टॉक पे था ये हाँ सारा लेवल अप किया हुआ, समझ रहा है कहीं से मैं। लगे कहीं पे लगा दिया। और क्या जिनके पास था उनको नए नए दे दिया ना, तो जो उनके पास था वो मैंने इसको दे दिया, लेफ्ट ओवर्स, समझ रहा है। जाओगे तो समझ लेंगे। लेफ्ट ओवर्स पकड़ा दिया मैंने इसको। इसका वेपन का भी सेम सीन है, लेफ्ट ओवर्स। ये मेरे राइडन पे थी ये वेपन। अभी तो ये है। क्या सीन, चेयर अटक गया कि हाँ रुक गया, ठीक। नहीं का सिर्फ R13 पे कर, ई मत कर। ओके, वैसे भी उसका ई काम नहीं आता है। चल छोड़, चलो स्ट्रीम एंड करते हैं। ठीक है बाय बाय। तू कहाँ जा रहा? तू स्ट्रीम एंड कर रहा ना? हाँ। बस।
स्ट्रीम को बाय बाय बोल रहा है कि तू भी ऑफलाइन जा रहा स्ट्रीम को है? ओके। मैं तो ऑफलाइन होने ही नहीं वाला। इतना क्या काम है वो जब पेंडिंग भरा था वो? नहीं वो तो अभी भी है। फिर रुक जा, मैं स्ट्रीम एंड करके। नहीं रुक जा, मेरा दोस्त जेंसिन खेल रहा है नुबड़ा, देखता हूँ। जाके देखता हूँ क्या कर रहा है वो, उसके बाद एंड करूंगा। वो मेलस्ट्रॉम फ्री है, देख बाद में कहाँ पे, एपिक पे, ठीक है। मेलस्ट्रॉम का मेटलस्ट्रॉम। ईपिक बोल के सही याद दिला दिया, पता नहीं। दरअसल खोल कर सर्च कर जरा, मेटलस्ट्रॉम सर्च कर जरा। रैगर बोल रहा है चैट पे मेटलस्ट्रॉम का कुछ तो है। ये रोड डेड रिडेम्पशन ही आ गया है यार। तो स्ट्रीम करते हैं। क्या? रोड डेड रिडेम्पशन आरडीआर? अच्छा ना, वो बाइक वाला ना। Whatever's going on over there looks pretty rock and roll to me. कौन सा मेटल 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 कुछ बोला था? मेटलस्ट्रॉम METALSTROM। मैं आऊं, तू किधर? Many insects ना follow रे, the मेरा cold ये wind to follow the light. मेरा But दोस्त humans का are the भाई same. खेल रहा है उसके अकाउंट पे। Except we call that light अब home. मैं अभी ऑफलाइन भागेगा, हो गया आज का। अभी उंगली नहीं करना मेरे को, इतना अच्छा क्वेश वाला स्ट्रीम पे और कुछ उंगली नहीं करना। मेटल स्टॉर्म नहीं मिल रहा ईपिक पे ना? हाँ हाँ। नहीं मिल रहा। The show begins! आया तो सही। विदाउट स्पेस यो पब्लिक यूजर, अभी तक तो जागा हुआ है। हाँ फ्री है मेटल स्टॉर्म। कितना जीबी का है देख जरा। जीबी? कितना जीबी का है? कितना है तेरे पास? अरे है, देख के बता ना कितना जीबी का है। अरे कितना है तेरे पास? मेरे पे लगभग 1.5 टीबी का हार्ड ड्राइव है, उसमें से बस अरे पेन ड्राइव है फोन में होगा कुछ है होगा अरे सुन तो, उसमें से बस होगा कुछ 80 जीबी खाली है। अच्छा 3 जीबी का है। ठीक है फिर अभी डाउनलोड लगाते हैं। अरे एनिमी स्पेलिंग क्या होता है मैं भूल गया।
4.5 GB डाउनलोड होगा ये। अच्छा 5 GB चाहिए। अरे पब्लिक यूजर ये क्या है? इमोजी तो क्यूट है भाई, कुछ भी बोलो। Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. इमोजी तो क्यूट है भाई, कुछ भी बोलो। कल ऋषभ का बर्थडे निकल गया। कल ना 12 अगस्त को है उसका। याद नहीं रहता है, लिख के रखना पड़ेगा। तेरा कब आता है? मैं तो भूल ही गया। अरे क्या दिक्कत है, होता है। मेरा आता सेकंड में। सेकंड्स में 0205। अंकित हाँ कितने सेकंड में? लगभग कितना होगा, क्या काउंट करने दे सेकंड्स। जब बर्थडे आता है ना सेकंड्स में। अभी याद सुबह इसमें बांग्लादेश नहीं, वो मेरे घर के बाजू में रहता है। अरे क्या ये इसको मारना चाह रहा है? इसे इसको मारना है, तो इसको मारने के लिए यहाँ पे क्यों घूम रहा है ये? सुबह, अरे वो बांग्लादेश से नहीं है रे, वो मेरा दोस्त है बचपन का। बोलो। कुछ नहीं कह रहा मैं, बस इसकी बैटरी अच्छी चलनी चाहिए यार। बैटरी कैसा चल रहा है अभी? ऑलमोस्ट मेरे को लगभग मतलब यूज टाइम देखा है। कौन सा दिन है, कब आया था ये? आज देख ले बस जाके। कब आया था शायद 1 वीक होना है। याद नहीं है मेरे को। हाँ ऑलमोस्ट 1 वीक होने वाला है। It's pouring out here. Wait, the water levels aren't rising, are they? An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver. The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless.
आज का स्ट्रीम कब तक होगा? अभी थोड़ी देर में बंद करूंगा। करंटली 82 का वॉचिंग हो गया था। हैं? कुछ भी 82 का वॉचिंग? भाई सही से देख रहा है ना? आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरी तरह चश्मा लगाना भूल गए थे। चश्मा पहन ले भाई, पब्लिक यूजर। हेलो गोल्डन बर्ड, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो, हाय यार, तुम्हारा फोटो तो अच्छा है बड़ा। Let's see what happens when you lose. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so क्या क्या? much to ask for? वो बहुत कुछ नोटिस करता है। अरे देखना पीएफपी कितना मस्त है बंदे का। Water will exist forever. आई ड्रू सीरियसली, नाइस नाइस भाई, कितना मस्त है पीएफपी रे। Instead of confining themselves to the यप आई नो, God should पर broaden their इतना horizons इतना in the दिख रहा world ना छोटा below. छोटा, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, पर गेस वही किया था मैंने। Many insects have a compulsion to follow the light. इधर है ये बंदा। वाह ब्रो, मस्त दिख रहा तुम्हारा फोटो पीएफपी। आई लाइक इट। How brilliant! किधर है ये? Can I ask you some Genshin question? Fun Q&A. पूछो पूछो, हो सके तो जवाब मिल जाएगा तुमको, अगर मेरे को आंसर पता होगा तो। ऐसा भी है कि आंसर पता होना चाहिए। ओ क्या होगा फिर अगर तू कहे ओ कर रहा? अरे इसका पीएफपी देख रहे, फिर अगर इसका पीएफपी देख कितना मस्त है। चलो क्या बात है। भाई मैं यही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दिस कैरेक्टर इज प्लेबल एंड दिस कैरेक्टर इज मोर नॉलेजेबल देन नाहिडा। सब बातें सुने हैं, बहुत बढ़िया। एंड दिस कैरेक्टर इज प्लेबल एंड दिस कैरेक्टर इज मोर नॉलेजेबल देन नाहिडा। कौन है ये कैरेक्टर? बताओ फ्रैगर। मेरे को भी 12:30 बजे दिमाग लगाना नहीं हो रहा। Who is the character? अरे दूर, अरे इधर आ जा रे, टेलीपोर्ट कर ले दूर में, वो रीसेट हो जाएगा। यप इट्स प्लेबल। कौन है ऐसा जिसको नॉलेज भी है, प्लेबल भी है? हम्म हम्म it's Lisa.
अब इधर आजा, आए देखे चलो, फिर से इधर आजा, फिर से इधर आजा। ये लो मेरा दिल, खेल कर रिटर्न कर देना। भाई यहाँ पे कोई दिल से खेलने वाला है नहीं, तो द करेक्ट आंसर, अरे वो जोंगली तो लिखा था, व्हाट द हेल। An assassin from our homeland, or a fool who I know, trespasses upon the जोंगली इज ए waters of कॉन्ट्रैक्टर। Chensa. Coveting हाँ, the वो shapes of फ्लैट the बनाते हैं। pure water can take on many forms. बात In this way, shall water deliver your punishment. बात तो सही है, The कॉन्ट्रैक्टर है power वो। of water is its ability to take any shape. Without Huh? solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. रुक जा, आवाज बहुत तेज है गेम का, आवाज नहीं आना तेरा। अब बोल, सोने जा रहा है? ओके, तू नहीं तो बोल रहा जा रहा हूँ सोने, अभी फिर अभी तो बोल रहा था, अभी ऑफलाइन जाएगा नहीं तू? Any shape. One who is ignorant of water's वाह treasures कमीने, fails also to comprehend its horrors. वाह कमीने, वाह नहीं मतलब वाह। He is a god of contract, but more knowledgeable than Naida. You can check it on Zhongli's profile. Okay. That's wine taste same as I remember, but where are those who share the memory? मुझे क्या मालूम किधर है? Of water is its ability to take any shape. Light it up. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask? More knowledgeable than primordial one. And rivers flow. Water will exist forever. His ideal animation, yes. Zhongli का आइडल एनिमेशन। Bro, I tried for 5%. क्या चीज? But can go up to 10% only. Stop. Venti's hiding his power, do you know? And also said something that god of contract is more knowledgeable than her. जोंगली में, अच्छा टॉप 5 पे तो टॉप 10 में है ना? अरे जब तक मैं आर्कॉन क्वेस्ट कर रहा था, तब तक तुम लोग कहाँ पे थे? हैं, अभी इतने लोग बैठ के देख रहे हो। आर्क भाई क्या मजा आया क्वेस्ट में, पूरा मजा मिस कर दिया तुम सबने, पूरा मजा मिस कर दिया तुमने तो क्वेस्ट का।
क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया गाइस। लाइक करो स्ट्रीम को, लाइक मारो, जो स्ट्रीम देख रहे हैं लाइक मारो। हो रहा था, वेरी गुड, सोते ही रहो। चलो 12:30 बज गए, अभी मैं निकलेगा, भागेगा मैं। गाइस स्ट्रीम को लाइक मारो, जो स्ट्रीम देख रहा है स्ट्रीम को लाइक मारो, लाइक मारना नहीं भूलने का। आज इतना मस्त आर्कॉन क्वेस्ट हुआ, इतना क्या क्या मजा आया क्वेस्ट में, क्या स्टोरी लाइन था, उफ, shit, बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन था, मजा आया स्टोरी लाइन देख के। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। हेलो सनी, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। अरे तेरे को और कोई और बॉस मारना वारना नहीं था क्या? रेजिन कितने था तेरे पे? रेजिन वगैरह पता है तेरे को अभी? तुम्हें वो पता है तेरे को अभी बहुत सारी चीजें? क्या तेरे को नहीं, ये मुझसे चैट पूछ पे रहा पूछ रहा, चैट से पूछ रहा। ये होता है है? मुझे रेजिन, नहीं लगा। ये मालूम है तेरे को क्या चीज है? नहीं पता? व्हाई इट्स कॉल्ड जेंसिन इम्पैक्ट। एक काम कर, ये चीज जाकर जेंसिन इम्पैक्ट वालों के उस ईमेल पे मेल कर कि तुम लोगों ने खोपड़ी वालों, तुम लोगों ने जेंसिन इम्पैक्ट का नाम जेंसिन इम्पैक्ट क्यों रखा है? इनके तो ऐसे बाइक मेरे को दिलवाते हैं। अरे हंटर। आप कुछ बोलो तो भी। बेटा निकल गया। अब वेटा निकल गया, वेटा। वो जो पीछे जो खड़ा है, दो जो एग्जैक्टली चिल्ला रहा है, नीला कलर का पहन के और एक ग्रीन कलर का पहन के, उनका बेटा है बेटा ये। आया, दौड़ के बेटा आया। 150, अच्छा। आप कुछ बोलो तो मेरे विवाद आगे होता है। पीछे घूम रहा है। अब वो इधर ही घूमता रहता है। ये इन दोनों का बेटा है ये दोनों का। ये भाग लेता है यहाँ से, अब बोलेगा बेटा किडनैप कर लिया तुमने, भाग ले यहाँ से। मैं लोगों के घर पे चढ़ के खड़ा हो जाएगा। The answer: the current world of Genshin was resulted by the action of gods in the past, hence the impact on the world. हैं? इसको जेंसिन क्यों बोलते हैं? तो पहले तू मेरे को ये बता। Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Second question: this character is also playable, and this character's first appearance was in Fontaine Archon Quest. Even Newland was afraid of this character's power. This character is not released in Fontaine. Kirk, 100%. प्रीमो जेम्स से क्या रेजिन खरीद लूं? पागल है क्या तू? प्रीमो जेम्स को कहीं खर्च नहीं करने का, उसको चुपचाप पॉकेट में रखने का। पॉकेट में नहीं है वो। प्रीमो जेम्स कहीं पे नहीं खर्चने का, दैट्स ए करेंसी, वो पैसा है गेम में, दैट्स गैम्बलिंग मनी। तो प्रीमो जेम नहीं यूज करने का। जेंसिन मीन्स गॉड। अच्छा, ये उसका चाइल्ड। अरे पब्लिक यूजर ने सही आंसर दिया है यार। 100 तोपों की सलामी पब्लिक यूजर के लिए, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, चाइल्ड। ब्रो 28 पुल्स में C0 R1 कर।
कुत्ता ओके ओ यस गाइस स्ट्रीम पे अभी नए जुड़े हो तो लाइक मारो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है अभी यहाँ पे जगह नहीं है साला गाड़ी क्यों नहीं खड़ी कर रहा अरे गाड़ी लेके आ रहे मबुई का हेलो अरे इसका ड्रेस तो मस्त है अरे अरे अंकल हटना आंटी को देखे ना दो नाइस ड्रेस थर्ड क्वेश्चन अरे जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करो रे मेरे को पनवेल निकलना है सुबह आई मीन स्ट्रीम करना है अरे मैंने क्लेम क्यों कर लिया इसको नेक्स्ट वीक के लिए रखना था ये चार नंबर कैटेगरी से काके रखबो दैट्स डिपेंड ऑन योर टीम तेरे टीम पे डिपेंड करता है वो भाई मेरा वर्ल्ड 100% हो गया हो जाया अब प्रीमोस कहाँ से निकालू F2P में हूँ मैं मुझे क्या मालूम ये होदवा बारबारा और रोजारिया वो तो तेरा टीम देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन है हेलो गोल्डन बर्ड इश्तरोत ओ इश्तरोत किधर गए तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन किधर है दिस कैरेक्टर इज नॉट प्लेबल दिस कैरेक्टर इज मेंबर ऑफ 3 biggest faction 5 Shinner Action Circle and the 4 Shades of Heavenly Principle third question this character is not playable the character is member of 3 biggest faction 5 Sinners Action Circle and the 4 Shades of Heavenly Principle who is the character Alice मैं कुछ भी बोल दिया ज्वाइन करूं अरे कुछ करने का है नहीं हनीमून ट्रैवलर रेन डॉटर नाम ना बता this character son created this character son this character's created son is playable Adventuring Paimon is right up my alley. yes Paimon There's still a lot of room for improvement with this machine. तो उसके साथ उसको रख ले Insects have a compulsion to follow बारबरा the को light, and humans are the same. Except we call that light hope. चलो बहुत हुआ गेम बंद करे नहीं तो गेम खेलती रह जाएंगे नो पाइमोन पाइमोन इज द करेक्ट आंसर आपको मिलते हैं 0 पैसे अभी यहाँ पे चल रहा है कौन बनेगा भिखारी करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है जहाँ पे हैं पावर्ड बाय अंकित पावर्ड बाय अंकित स्पॉन्सर्ड बाय अंकित और पैसे देगा फ्रैगर नेक्स्ट वन प्लीज 1 ट्रेवलर 2 शन्यून 3 काया 4 बरबरा बरबरा इज चार्ट पैसे त्रिशूल वाली है कौन कौन नहीं नहीं बारबरा नहीं पैसे हाँ है ना तेरे पे इधर अभी तेरे पैसे निकालता हूँ मैं रुक जा ₹2 पे भी गिव अवे नहीं करता कौन बनेगा करोड़पति का मोटो लगा रहा है
कौन किसकी बात चल रहा है एलियू? मैं क्यों करूँ गिव अवे? टारगेट है ना 500 सब्सक्राइबर पूरे करो फिर चले फिर होगा गिव अवे। अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिखना भूल गया शायद से। हैशटैग अंकित। वाह वाह रे वाह। हाँ। ब्रो स्पेशली डज हैशटैग। अब क्या ही करे, कुछ बोल भी नहीं सकते। अबे पब्लिक यूजर तू भी? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पूछो रे। नेक्स्ट स्ट्रीम ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्ट्रीम मतलब कल। ओके तो फोर्थ क्वेश्चन कल होगा। तब तक के लिए ये कोर्ट होल्डिंग पे जाता है। रैगर गुस्सा हो गया, लाल मुंह लेके आ गया। पब्लिक यूजर जहर पी लिया। फोर्थ क्वेश्चन हु इज सस्टेनर ऑफ बॉर्डर? दिस कैरेक्टर इज नॉट पेएबल। हैं? सस्टेनर ऑफ बॉर्डर सनी देओल। सनी देओल भाई, कोई इसके ऊपर कोई आंसर ही नहीं हो सकता ना। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ट्रैवल वैवल नहीं है, सनी देओल है। है यो व्हाट द सनी देओल है भाई। ये 250 किलो का हाथ है उसका। बॉर्डर बॉर्डर का सस्टेनर वही है, वही गाना गाता है। कोई क्या था वो गाना, मैं भूल गया। ए पब्लिक यूजर हेल्यू। सी स्टॉप्स कर फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द वर्ल्ड। डोंट नो द कैरेक्टर इज नो आइडिया भाई। इतना डीप लोर थोड़ी ना पता है हमको। तुम बताओ। She will be released in Nod-Krai, Asmodee, Columbina, Asmole। और कौन है? आई नो। लौमा। और बताओ और कौन है? वारका, एलिस। यस कोलोमो, कोलोमी नहीं होगा। अरे एलिस मैंने बोला, अरे मैंने बोला है मैंने। अरे हाँ, स्कर का वॉइस लाइन है ना, डेंस लीफ के बारे में, एलिस के बारे में और डोरी के बारे में। 3 वॉइस लाइन है भाई।
और चीटिंग नहीं, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे चीटिंग कैसे हुआ? ये स्कर्क वॉइस लाइन चेक करो। अरे मेरे पे स्कर्क नहीं है, पर फिर भी मेरे को पता है ये कि उसका 3 वॉइस लाइन्स है। और इजी क्वेश्चन पूछी, गूगल मत करो। कौन कर रहा है गूगल? मेरे दोनों हाथ इधर है, ये देख। कौन कर रहा है गूगल? यूर गर्ल गोल्डन बर्ड। अरे ये कैसा क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? ये कैसा क्वेश्चन है आउट ऑफ भाई? सिलेबस, आउट ऑफ ये सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस चला गया। तू तो फ्रैगर हेलो। तुझे तो लड़कियों से बात करने में डर लगता था, आज ऐसे कैसे पूछ लिया डायरेक्ट, वो भी चैट में हेलो। अबे ये फ्रैगर। अरे वो पूछी बोल दिए। अच्छा, इसीलिए बस इतना छोटू सा, फिर तो लियू भी बोलता रहता है। फिर उसको क्यों नहीं पूछा तूने कि वो लड़का है कि लड़की है? लियू भी तो बोलता है, मतलब ऐसे पूछी, गई थी, ऐसे बोलता है वो। तो उससे क्यों नहीं पूछा है? नाम से पता लगता है एमसी है वो। वाह वाह कमीने वाह। रुक जा, मैं बता रहा बेचारे को, रुक जा, आके तेरे को बताता है वो। ले इसने अभी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। वो 4 क्वेश्चन पूछने वाला था, 5th क्वेश्चन आ गया। Venti always make fun and misbehave with that Archon, but also afraid of that Archon. क्या? आज कोई मरेगा आना फ्रैगर। We will miss you. We will miss you. Who is that Archon? Who is that Pokemon? It's it's Raidenmon. Zongli Zonglipon. Zonglimon. It's Zonglimon. दस करोड़ का क्वेश्चन। बाय द वे गोल्डन बर्ड, एक चीज बोलना है, कन्फेस करना है कुछ मेरे को। मैंने एक छोटा सा वो किया है, क्या बोलता है? भूल गया करके। नहीं नहीं, सुन तो एक सेकेंड। गोल्डन बर्ड हेलो, मैंने एक छोटा सा चोरी किया है, कन्फेशन करना है उसका मुझे। तो जरा देखो, मैंने जरा ये चीज ढापा है थोड़ा सा, ठीक है? व्हाट आई एम, अरे शी, आई नोट नीड अ गर्लफ्रेंड है। यू आर गोइंग सो फार। ले फिर अगर तेरा क्वेश्चन आ गया इनडायरेक्टली, मैं बस ये बोलने के लिए गया था कि आंसर। मुझे इतना पसंद आया, मैं ये डाउनलोड कर लिया फोटो, ठीक है? बस इतना ही बोलना था, बस। थैंक यू। अब इसके लिए तुम मेरे को शू मत कर देना। ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू। अरे फ्रैगर तू तो डरता था, आज कैसे पूछ लिया? मैं तो सोच, अरे फ्रैगर लिटरली डरता है, पता है तेरे को विवेक? वो लड़कियों से डरता है, वो जब से नील ड्राम का चीज आया है। फ्रैगर डरता है लिटरली। आज वो डायरेक्ट चैट में पूछ लिया, पर कैसे पूछा मुझे नहीं पता।
किधर चले गई? लड़की है बोल दिया तो अब इसको ऐसे ही बोलना मेरे का रहेगा ब्लू। ब्लू ड्राम के पहले से बाय सीमेंट लेफ्ट रहेगा ब्लू ड्रम। अरे कोई ब्लू ड्रम वाला इमोजी डाल दो रे यूट्यूब पे। ये भाई बाय द वे गोल्डन पर मुझे बस वही बोलना था, ठीक है? तो आप क्या आपको कोई दिक्कत है? अगर है भी तो क्या मैं उसको रखीगा डाउनलोड करके? ना ना, आई विल गिव यू टिप। नेक्स्ट विल बी प्रेशर कुकर। मैं बता रहा हूँ, बिरयानी का हंडी आता है ना, हंडी, उस पे डाल दे फ्रैगर को। ओके, आई हैव मोर पिक, इफ यू वांट यू कैन हैव मोर। ओह सीरियसली, यू आर विलिंग टू गिव देम? ये ऑफ कोर्स आई वांट। जरूर चाहिए भाई, ऐसे कैसे? सामने से ऑफर आया है थोड़ी ना ठुकराऊंगा मैं। हेलो विवेक, कुछ देख के गलत नहीं लग रहा है ये? तभी तो डाला मैं। समझ नहीं आ रहा ये है क्या। मैं ड्रम ढूंढने गया था। No one appreciated my drawing. You are the first one. Seriously? That will be great, Golden Bird. ऐसे बहान बहन लिखना था, इसको बहान लिख दिया। इसका स्पेलिंग भाई किसी दिन ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पिटेगा किसी से, देख लेना, मैं कह रहा हूँ। ड्रम का तो पता नहीं। हैं? ड्रम का तो पता नहीं, बाल्टी मिलेगी। बाल्टी डाल दे। अरे ये पिक्चर, अरे ये पिक्चर पिंटरेस्ट पे है, गोल्डन बर्ड। एवरीवन सेड दे डोंट लाइक कार्टून टाइप पिक्चर है। भाई बाल्टी, विवेक आप कुछ जा चैट पे बोल, ऐसे कैसे छोड़ रहा तू? नो, कैन नॉट बी। आई मेड दिस वन। मेरे को तो बहुत पसंद आया, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। बस बस बस, छोटा बहुत है। अगर तुम्हारे पास और है तो तुम मुझे भेज सकते हो। अगर तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, और नहीं तो भेजने का जगह कहाँ है? और एक ही जगह इंस्टाग्राम। मेल भी कर सकते हैं। मेल, मेल भी कर सकते हैं, पर मेरा मेल कहीं पे मिलेगा नहीं। ये भी है। यू कैन, यू आर एक्सपोज्ड गोल्डन बर्ड। ओह, ये फाउंटेन का स्टीम बर्ड तो नहीं है? हमारा प्यारा शार्लेट। होल्ड योर पोज। आई विल गिव यू 1000 रुपीज इफ यू फाइंड इट ऑन Pinterest। एक फ्रेगर कान लेके इधर, मैं कुछ पर्सनल चीज बता रहा हूँ तेरे को। एक दूसरा आईडी बना और इसका फोटो अपलोड कर दे, ठीक है? सुन 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 फ्रेगर सुन, एक आईडी बना, फोटो अपलोड कर, ठीक है? और उसको स्क्रीनशॉट भेज दे। नहीं किसी को बोलना नहीं, मैंने बोला है। 2000 में से 500 मेरे। बाय।
हाँ तो क्या चल रहा था मैं, डोंट माइंड हिम। अरे टर्की फ्रेगर तुझे अबे ये फिर चालू हो गया। गाइस हेलो एक्सक्यूज मी, आज आज नहीं, आज नहीं, बस तुम लोग फिर से बस चालू मत हो जाना उस दिन की तरह। मस्त आइडिया है अंकित भाई। अरे तुम्हारा दिमाग, बिजनेसमैन का दिमाग लाउड़े, ऐसे कैसे चलेगा। टर्की क्या बे, बहन कह दिया है उसको, राखी भी बंधवा लेता उससे, तब जाके मानता ही है पब्लिक यूजर। मुझे कुछ बोला जीबी रोड वाले मत बोला करो। भाई ये मेरे को उस दिन का याद दिला रहा है, आज से 3-4 दिन पहले का। अरे भाई प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है। उसने बहन बोला, वो ऊपर चैट में है, वो प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ। हेलो, जस्ट चैटिंग में व्यूअर्स ऐसे कैसे हो सकते हैं, एक्सक्यूज मी। ये क्या अश्लील बातें कर रहे हो, अरे इन दोनों को इग्नोर करो, ये दोनों ऐसे ही है, कभी कभी झगड़ा करने लग जाते हैं, और कभी कोई दूसरा आके कुछ एक एक को बोलेगा तो दोनों मिलकर उस पर चढ़ जाते हैं। उस दिन कोई तो एक आया था, दोनों मिलकर चढ़ गए उस पे। हाँ ना, उससे पहले ये दोनों उससे पहले ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। पब्लिक यूजर ने फ्रैगर को बोल दिया तू गे है क्या, बस भाई चालू चैट में दमादम, ये फ्रैगर अनित वर्सेस पब्लिक यूजर, ले भाई ये उसको वो उसको, नहीं अनित नहीं था शायद से, वो था क्या था वो, अरे कौन था, भूल गया मैं नाम, भूल गया, अनित ही था शायद से, नहीं बासु था, बासु। वासु था, यस, याद आया मेरे को। भाई देख भाई, बंदा अगर देखेगा ना मेरे को गाली देगा, साला याद नहीं है तेरे को। हट भाग में जाए लोग, बहन बना लिया है तो बहन बन गई, इवन इफ शी डोंट वांट टू बी। फिर जोर जबरदस्ती का भाई बन रहा है ये तो। वैसे आपका भी आर्ट बना सकता हूँ, आपका फोटो चाहिए हैं, ठीक है। मेरा आर्ट क्या ही बनोगे, गंदे से, मैं खुद आर्ट हूँ, इतना गंदे से शकल का क्या ही आर्ट बनाओगे, फिर तुम्हारे आर्ट को छोटा करना हो जाएगा, मत बनाओ, लेना तो। आपका फोटो चाहिए, वो बोल लिया बासु अबे फोर्सफुली बहन बना रहा है। तो तुझे किसी ने पूछा, कोई ना पतला कर दूंगी बिग पे, अरे उसका दिक्कत नहीं है, मोटा पतला का क्या सीन है। अभी बस एक बार हाथ को ऑपरेशन करवा के हाथ ठीक कर लूं, फिर सारे फैट को फेंक के निकाल के फेंक के मारूंगा रास्ते पे। ठीक तो दिख रहे हो। भाई जिम कर लो, ये ले, ये देख, ये दिख रहा है तेरे को, है ये दिख रहा है, जिम कर लो पब्लिक यूजर, ये दिख रहा है तेरे को, ये दिख रहा है, साफ साफ टैटू है इधर, टैटू पूरा एकदम वो क्या बोलते हो, सांप वाला टैटू है। जिम कर लो भाई, जिम, तुझे क्या लगता मैं इधर घर पे बैठा रहता। सॉरी भाई मुझे नहीं पता था,
छोड़ दे भाई, बच्चा है अभी। अरे नहीं, उसको नहीं पता होगा ना। हो ही सकता है, वो नया है ना, उसको पता नहीं है। बहुत गंदा सीन हुआ था यार। क्या क्या? कुछ नहीं, बहुत गंदा सीन हुआ था। मेरे पास शायद फोटो है इसका। एक सेकेंड, मेरे को खुद को भी देखना है, बहुत दिन हो गया नहीं देखा मैंने। अजीब शौक है मेरे तो भाई, अजीब शौक है मेरे को। मेरे हाथ का टूटा हुआ जो फोटो है वो देखना है। बताओ, ऐसे शौक कभी नहीं पालना कोई, ठीक है? रहने दे रहने दे। ठीक है गोल्डन, बट तुम मेरे को वो फोटो कब भेज रहे हो ये बताओ। मेरा आर्ट तो ठीक है, तुम फोटो कब भेज रहे हो मेरे को? तुमने खुद से बोला है सामने से, मैं तो अब पूछ 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 के मांग मांग के लेके रहेगा। बिकॉज आई वांट दैट फोटो। मुझे बहुत पसंद आया ये आर्ट, मुझे पसंद है ये सारी चीजें इस टाइप का थोड़ा बहुत। अब लोग कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने रूम में लगा रखा फोटो। मेरे रूम पे भी है, इधर है, इधर एक है, इधर शीतला लिखा है, उधर राइडेन सुगन का है। और क्या बोलोगे बताओ? अब बीच में ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड चिबी एनिमे आर्ट, यस, चिबी आर्ट, टीवी। ये आर्ट बनाना बहुत इजी है, जस्ट ड्रॉ करके कैनवा में एआई में ऑटो फिक्स कर देना, कलर फिल कर देना। अरे हुआ डाउनलोड मिटल स्ट्रॉम, अरे डाउनलोड लगा ही नहीं मैंने, कैसे डाउनलोड हो जाएगा? अजीब क्वेश्चन है। मेरा तो हो गया। तेरा हो गया? खेल के तो कैसा है? अब वो पता नहीं कब खेलूंगा मैं। वाह। 3 दिन के लिए फिर चला जाऊंगा अभी। कहाँ जा रहा है? थोड़ा सा काम। ओके, 3 दिन? हाँ। भाई बिजी इंसान शादी वादी करने जा रहा है क्या? वो अच्छा, 15 तारीख आ रहा है ना? है ना, 15 14 है। आज 14 है वैसे, बट मतलब टेक्निकली 14 है, वैसे तो 13 ही चल रहा है हमारा तो। आज ही है ना? हम्म। तेरा और कोबरा का सेम सेम मंथ में आता है। किसका? तेरा और कोबरा का क्या? वही, जो कोबरा का 12 तारीख को गया। नहीं। तेरा मंथ कौन सा आता है? तेरा मंथ भूल गया मैं। मंथ भी याद आ जाएगा। वाह कमीने वाह। ये बोलने में क्या दिक्कत होता है? नींद आ रही है मेरे को। चल जा, सो जा। भी जाता हूँ सोने को। डीसी लिंक कहना बताएगा उसके लिए, डीसी क्लिक नहीं हो रहा है। क्या क्या मतलब, ये लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है? चलो अंकित, बाय बाय। बाय गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। फिर अगर डीसी का लिंक कॉपी पेस्ट करके जरा, कॉपी करके पेस्ट कर चैट पे। आओ, तुम्हें दिखाए, कुछ चीज दिखाए तुमको। एक सेकेंड। हम्म। फ्रैगर ये देख। दिख रहा? बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट विवेक, स्ट्रीम पे देख के जा, लास्ट अगर खुला हुआ है अभी तक तो। वही एक्सरे का फोटो निकाला है मैंने। ये जॉइंट है, ये जगह, ये जगह। गनीमत है एक्सरे की फोटो है। वह एक सेकेंड, ओरिजिनल फोटो भी तो होना कहाँ चाहिए। पकड़ा हुआ था? कहाँ?
एक्सरे में। कुछ नहीं। हाँ, अरे हाथ तो वैसे मुड़ गया था ना। अरे पेन के। अच्छा ऊपर क्लिप लगा हुआ है, हाँ। वो ऐसा लग रहा है जब पकड़ा हुआ है करके। अरे भाई क्या पेन हो रहा था भाई, पागल हो जैसा। वहाँ का मेन जो वो रहता वेन, वो कट गया था। टडटडा, टडटडा। ये देख डाउनलोड पे लगा लिए, ये ले रेगर खा ले, ये देख। इतू सा जगह टूट के 6 पीसेस हुआ है, 6 पीसेस। तो यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है अभी। डिसकंटिन्यू हो गया था। अरे फिर अगर ये ले तेरे लिए। रेगर बस तेरे लिए। भाई डिस्कॉर्ड से भी तो हो रहा है भाई, लिंक क्लिक नहीं हो रहा। मोबाइल से हो तो रहा है, डिस्कॉर्ड का लिंक क्लिक ऐसे कैसे नहीं हो रहा। लिंक तो क्लिक होगा। हाँ ना। ई का है ये, वो था। हाँ, यहाँ पे वो लगाते हैं ना, इंजेक्शन पुश करने के लिए। वेनुला। चैनल चैनल। हाँ वेनुला चैनल। हाँ ये वही है, तो उसका दो मुंडे था कि अलग अलग से कि मेरा सुबह शाम टोटल 8 10 इंजेक्शन चलता था, सुबह 5 शाम को 5। तो इसमें पुश करते थे। डिट्सी का सब कुछ लॉक क्यों है? 5 इधर से 5 उधर से। भाई 5 इधर 5 उधर। मेरे को एक हाँ। नर्स ने बोला कि इस वाले पे तेरे को दर्द होगा, मैंने बोला ठीक है। तो उसने पुश कर दिया। मैंने बोला क्या दर्द किधर है, हुआ ही नहीं मेरे को कुछ। बोला तेरे को हुआ नहीं कुछ? नहीं। फिर ऐसे करते करते फिफ्थ थोड़ा बार एचपी ले लेना। ले लिया मैंने। थोड़ा टेंशन ले। फिर और दर्द? ऐसे करते करते फिफ्थ डे आया, लास्ट डे था इंजेक्शन का। ठीक है। ऐसे लास्ट डे आया। तो उस दिन जब इंजेक्शन पुश किया, मेरा चैनल हो गया था खराब। भाई मेरा हाथ इतना से हो गया इतना। भाई जो दर्द हुआ था उस दिन, वो इंजेक्शन मैं ले ही नहीं सका। आधा आधा पुश हुआ, आधा बाहर गिर गया। मतलब इतना दर्द हो रहा था। अरे वो सोडियम का था ना, तो उस पे वो पाउडर पे डिस्टिल वाटर डाल के पुश करते हैं। तो बहुत दर्द हुआ था। ज्वाइन डीएम मी, ओके। करते हैं तुमको डीएम। क्या था ये मेटल स्टॉर्म सेलिंग, क्या था एमईटी? एमईटी। मेटल स्ट्रोम विदाउट स्पेस। एस टी। अरे क्या लिख रहा मैं? मार्टली स्ट्रॉम। अरे उस पे भी हो, जेंसिन के उस पे। ये वाला है क्या देख, फ्रेगाटटी। नहीं ये तो नहीं है, ये तो पैसों वाला है, ये वाला नहीं है। मेल ये तो कुछ और ही है टट्टी। माफ करो माफ करो माफ करो। माई बैड, माफ करो। हाँ हाँ वो तो समझ गया मैं, वही सर्च किया था मैंने। अबे सर्च का हिस्ट्री भी नहीं दिखा था साला। सीधा कॉपी पेस्ट मारो। अरे पागल इंसान, चैट पे तू
लिंक्स पोस्ट कर रहा है सीरियसली। आओ मेरे को कैश ऑन डिलीवरी करवाओ। कैश ऑन डिलीवरी। नाविद ये कौन है, तू है क्या? अपना क्या नाम है? मेरे गाने बंद हो गए यार जाने के चक्कर में। हम्म। अरे मेरे को पहला जब फुरीना मिला था तब का फोटो, कब का है ये? डिटे, यादें। डिटेल्स कहाँ से दिखता है? हेलो, यहाँ पे। 24, यस, 1 जुलाई को मिला था फुलीना। देखो गोल्डन बार्ड गया क्या? डीएम गया क्या? अगर चैट पे हो। भाई मेरा पीसी कैसा था? अच्छा नहीं, ये मैं दूसरा पीसी रिपेयर कर रहा था, माफ करो माफ करो। भूल गया। मेरा पीसी भी ऐसा ही था, उसका फोटो है मेरे पास। है ना। अभी कैसा हो गया यार। बहुत टाइम लगता है अपग्रेड करने में यार। ओ भाई विवेक ये देख, विवेक तू ये विवेक देख, का फोटो ये मिल गया। ये है असली चीज जो है यहाँ पे अभी। मेटल पे। भाई 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्क्रू है, यहाँ पे 3 है, बताओ। अब मेरे को यूट्यूब कुछ करना दे। भाई जस्ट इमेजिन, ये मेरा जेनसिन का क्वेस्ट का स्ट्रीम था, प्लेलिस्ट पे है, कोई देख रहा है, होने वाला है नहीं पर सपोज एंड में जाके ये सारे कांड हो रहा है, बताओ। अरे नोटिफिकेशन कहे आता है। चेक डिस्कॉर्ड, हाँ हाँ वही देख रहा हूँ मैं। अरे एलिस एडोनोवा, डीपी भी बढ़िया है।
अरे ये वाला भेजो मुझे, इसका भी हाई क्वालिटी वाला चाहिए, जो तुम्हारा यूट्यूब यूट्यूब पे डीपी है, मुझे इसका हाई क्वालिटी वाला चाहिए। स्रोत का। सब कुछ भाई को हाई क्वालिटी में चाहिए, 4K में। 4K नहीं होगा तब भी चलेगा। रात को भी 4K देखते हैं। 4K का कोई सीन नहीं है। ये चश्मा इसी का नतीजा है क्या? क्या क्या? ये चश्मा इसी का नतीजा है। घंटा। भाई शिट, ये क्या फोटो था? अरे हाँ, हाय हाय हाय। अभी फिर से एक इशरत का ये फोन में नहीं है। अच्छा, तो इसको डाउनलोड पे लगा देते हैं ना। जगह है मेरे पीसी में, पहले वो देखना पड़ेगा। 3 GB वाला जगह कहाँ, 3 GB कहाँ खाली है? एक पे 8 GB खाली है। 5 GB चाहिए। हाँ फिर हो जाएगा, जी ड्राइव पे, जी ड्राइव पे हो जाएगा। अबे अब तक क्या कर रहा था? हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, वेलोरेंट में स्मोकिंग कर रहे थे। ओमेन खेल रहा था। ध्यान भटक गया था थोड़ा। अरे मैं जरा तेरे आज को वो बिजी दिखा है। रहा था, अब क्या बोलते हैं, देखा देखा कुछ भी। कुछ बहुत ही बुरा चीज दिखा रहा था। फोटो मेरा दिखाने वाला है क्या? मेरा मेरा जिंदगी आधा वही पे खत्म हो गया। अरे उसी क्या, वही तो दिखा रहा था अब तक, हाथ वाला। टुडुक टुडुक। ये हाथ कब ठीक होगा? पहले से तो बहुत बेटर है यार। है तो सही, क्योंकि मेरा वो जो दिखा ना तुझे, गैप दिखा ना जो बोन पे, वो गैप पूरा वो ठीक हो काफी गया है। तो अभी बस उसका, हाँ, बोन पे बस वो हो रहा है कि मजबूत हो जाए थोड़ा सा। और जैसे ही मजबूत हो जाएगा फिर तो भाई ठीक लगा। कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है? हम्म हम्म दैट्स अ टफ डिसीजन। कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है, क्या भेजा तेरे अरे वो फोटोज। को? अच्छा फिर ठीक है। तू 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 क्या सोच रहा है? अबे रात के 1:30 बज रहे हैं, क्या उल्टा सीधा सोच रहा है? क्या भाई पागल इंसान था, शर्म कर ले कुछ, शादी वादी कर ले मुझे जा। है ना नींद आई। हंटर हंटर हंटर। प्लीज मदर, द बेस्ट वन। आओ मैं सबको, सो जाऊं तो ज्यादा बेटर है। सबको सबको दिखाई देता हूँ, ये लो फुल स्क्रीन। यस। इन आंखों में मैं डूब जाऊं तो। अरे मेरा लाइन चोरी करता है साले। मेरा लाइन चोरी करता है, शर्म नहीं आता तेरे को? हैं, दिन दहाड़े मेरा लाइन चोरी करता है। रात में। अरे रात दहाड़े। दिन तो है ही नहीं। अरे इसके आंखें थोड़ा खुला होता तो हम मैं आंखों डूब में, चुका ना हम उसमें। हम थोड़ा आंखों में डूब सकते थे ना। मैं डूब चुका। मैं डूब चुका उसमें। भाई अरे इसको वॉलपेपर बनाएंगे। भाई अच्छा लग रहा है बे, पूरे स्क्रीन में बस इसका ही मुंह दिख रहा स्क्रीन पे। इसका वॉलपेपर बनाएंगे। हो। इसका वॉलपेपर पीसी पे कि सच में वॉलपेपर? नए नए पीसी वाला, अभी पीसी पे वो लगा है। अभी मेरे को गाली पड़ेगा चैट पे, पर इसका नाम नहीं पता मेरे को, मैं भूल गया।
शिनोबू है शायद से। ये डीमन स्लेयर का, मैं डीमन स्लेयर दिखा नहीं है पूरा मुझे बहुत कुछ दिख रहा है अंकित। यहाँ पे ना। दिखेगा ना, बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, दिखेगा क्या। फिर भी दिख रहा है, आंखें वहीं चली जाती हैं। मैं चला सही। वाह शिनोबू, हाँ। अब अरे मुझे सोना पड़ेगा। विवेक, तू तू भाड़ में जा, तो एक काम कर, तू ये देख, तेरा तेरा सोना जाने का वो ठीक हो जाएगा, देख। इसके संग और भी कुछ लगता है। हेलो गाइस, चाय पी लो। उसका फोटो मेरे पीसी में नहीं है ना। ये वही जिंजर ब्लैक टी है क्या? नहीं, ये हॉस्पिटल का बेड नहीं दिख रहा पीछे। तो मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ ना रूम में। अब इसको गाली दूंगा मैं, ये अगर इसने उसका नाम लिया फिर से। भाई हाथी का सूंड देखोगे। चलो गुड नाइट। ओके बाय बाय गोल्डन गोल्डन बर्ड, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग अराउंड एंड थैंक्स फॉर द फोटोज। और मुझे बाकी भी भेज देना, मुझे चाहिए, स्पेशली इशरत वाला। ठीक है, क्वेस्ट बाकी है, कल पढ़ लिख के आना। ये देख, फिर अगर तेरा बहन जा रहा है, बस एन8 लिखेगा। तेरा जोर जबरदस्ती का बहन जा रहा है, बस एन8 लिखेगा। शर्म नहीं आता तेरे को? सही से उसको बाई बोल। मैं देख रहा है, मैं मेरे चैट पे रिश्ता बना दिया भाई बहन का, देख रहा है। मेट्रो में नहीं। बस बस सिस्टर, मेट्रो में तेरा सिस्टर गया, आई मीन गई, बस। कोई भाई देख देख देख, कमीने को देख, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बस लिख के क्वेश्चन मार्क डाला है। ये देख फिर, अगर ये तू है चलो, मैं मेरा को कुछ फोटोज मिला, ये ऑफिस के फोटोज है, ये मैं विवेक को पर्सनली दिखाएगा, स्ट्रीम पे नहीं दिखा सकता। चलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। गाइस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। स्ट्रीम को यहीं पे खत्म कर देते हैं, बहुत हो गया, 1:00 बज गए, बहुत देर से बोल रहा हूँ भाई। 1 घंटे का स्ट्रीम होने वाला आज फिर से। इमेजिन, पौने पौने 6 घंटा हो गया है। चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ नहीं है, लाइन भूल गया मैं। आज के स्ट्रीम में आया मजा, क्योंकि आज क्वेस्ट बहुत बढ़िया क्वेस्ट था, जो जेनसिन से एक्सपेक्टेड था वही दिया है जेनसिन वालों ने। तो थैंक यू जेनसिन, तुमने डिसअपॉइंट नहीं किया, और तुम्हारा स्टोरी लाइन हमेशा हमेशा के लिए इधर रह जाएगा। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट।